Do you all remember what we had done yesterday? Yeah. Okay. We will start with question number 1. वो बाद में उसके लिए एक पेज छोड़ दो. स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए एक पेज छोड़ने का, वो अभी नहीं कर सकते. थियरी बाय था ना? या बाय तो क्या स्टार्ट करो. क्या एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करो and identify the method of purchase consideration. बोलो which method? नहीं, start करो. The balance sheet of S Limited is given here on 31st March 2011. Equity share capital 5 lakhs, preference share capital 2 lakhs, general reserve, capital reserve, P&L. 3 reserves are given, 5% debentures and creditors. Quite manageable. Goodwill, land and building, stock, machinery, debtor, furniture, cash, preliminary expense. This is also manageable. So balance sheet is given here. Then we have P Limited absorbed business of S Limited. So P Limited is purchasing company, S Limited is selling company, and it is a case of absorption. Absorption means taking over the business. Here one purchasing company will be there, one selling company will be there. And then 6 information provided. Entire business was taken over except debtors, cash and creditors. Quite manageable. Yeah. Goodwill was valued at 3 lakhs. एक सेकेंड, आपके बुक में गुडविल है क्या और कुछ है? नहीं, it is an error. Make it furniture. Neha, you were there yesterday, correct? कल थे ना आप ऑनलाइन? Done? Furniture was valued at 3 lakhs, land and building at 750, machinery at 2 lakhs and stock at 150. Can I say revised value is given? Yeah. Debtors realized at 75,000. Fair enough. Revised value is given. Realization expense 5,000. Who will pay this realization expense if nothing is given then? If nothing is given, selling company will pay this. Purchase consideration was settled at 2 lakhs in cash and balanced by 1 lakh equity shares of 10 each, 25% premium. So PC is settled 2 lakh in cash and balanced by equity shares. 1 lakh equity share clearly given. So can I say information about payment is given in the question? So information is given here. So we can say it is net payment method. Preference shareholders are settled at 5% premium in cash. So preference shareholder को 5% extra pay करेंगे. That's it. Close the books of S Limited. S कौन है? Selling company, and pass journal in the books of P Limited, that is purchasing company. I hope you understood the question. So before starting with the solution, main solution, we have to go for purchase consideration. So question number 1. If you can't identify the method, no worries, just you have to write purchase consideration.
purchase consideration under net payment method. किसको पे करेंगे? ओके, डायरेक्टली इट इज गिवन कैश 2 लाख एंड इक्विटी शेयर्स. ओके, फेयर इनफ. डायरेक्ट लिखते हैं. Equity shares are issued at premium. कितना equity shares? 1 lakh into what is the rate? 12.5. So 14 lakh 50 is purchase consideration. बोलो इधर तक मैनेजेबल? PC done? Okay. What is next? Close the books of S Limited. So books of S Limited. कौन है S Limited? सेलिंग कंपनी. चलो, डू यू रिमेंबर कौन से अकाउंट बनेंगे? रियलाइजेशन. सेकेंड इक्विटी शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है ना, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3 हुए. फिर कैश बैंक भी बनेगा 4. परचेसिंग कंपनी कौन है? P लिमिटेड 5. एंड मोड्स ऑफ पेमेंट. मोड्स ऑफ पेमेंट में क्या है इधर चेक करने का, ये दोनों मोड ही है. तो कैश का अकाउंट वापस नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी एक बनाया. इक्विटी शेयर इन P लिमिटेड. इन P लिमिटेड अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. सो दीज मेनी अकाउंट्स विल कम. रियलाइजेशन नॉर्मली 3/4 पेज, मैक्सिमम साइड 3/4 पेज बनाने का, करेक्ट. एंड बाकी सब अकाउंट like 5-6 lines you can prepare. So prepare realization account. Ready? कितना बनाया? रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैश बैंक, P लिमिटेड एंड दिस इक्विटी शेयर. 6 अकाउंट रहेगा. नहीं, 5-6 लाइन्स. सी इधर 4 अकाउंट इधर आ जाएगा. चाल से चल कर डन. स्टार्ट करो. चलो, डू यू रिमेंबर द स्टेप्स? सेलिंग कंपनी के स्टेप्स थे ना कुछ. कितने थे? 7. कल तो 7 पढ़ाए थे, करेक्ट. सो 7 स्टेप्स. बोलो स्टेप नंबर 1. हाँ, सो बैलेंस शीट खाली करने का है. सो एक एक स्टेप इफेक्ट देंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल किधर जाएगा? किधर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. विच साइड? क्रेडिट साइड. एंट्री क्या बनता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किधर जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट.
कितना है 2 lakhs. Agreed? Capital, sorry. चलो नेक्स्ट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल, तीनों रिजर्व्स है ना, किधर जाएगा? रिजर्व्स किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे. सो इक्विटी शेयर होल्डर में बाय. Clear? 5% debentures and creditors, 150 and 40. Can I say realization में जाएगा? 5% debentures and creditors. कितना debentures? 150. इनर में लिखना है, इनर में लिखो, आउटर में डायरेक्ट लिखना है, आउटर में लिखो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. डन. आगे बढ़ते हैं. गुडविल, गुडविल कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन. पूरा बैलेंस शीट खाली करना है. So it will be transferred at book value. Land and building क्या वैल्यू पे लेंगे? बुक वैल्यू. स्टॉक, $2 lakhs. मशीनरी, $250. Debtors, 80,000. Furniture, $120. What about cash? Taken over or not taken over? If cash is taken over तो रियलाइजेशन में जाएगा. नॉट टेकन ओवर तो कैश अकाउंट में जाएगा. तो कुछ बोला है क्या? बोला है. क्या बोला है? कि नॉट टेकन ओवर. करेक्ट. कितना है? 90,000. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 30,000. इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट साइड. बोलो, इधर तक कोई डाउट? यहां तक समझा? क्या था स्टेप 1? एम्प्टी द बैलेंस शीट. अग्रीड? क्या वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे. डन. स्टेप 2 बोलो. पीसी ड्यू एंड पीसी रिसीव. ड्यू मीन्स
रिसीवेबल किसके पास से? परचेसिंग कंपनी के पास से. तो परचेसिंग कंपनी विल बिकम अवर डेटर. सो एंट्री परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितना था पीसी? 1450 था ना. सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में बाय पी लिमिटेड. $14,50,000. क्लियर यहां तक? चलो पीसी ड्यू हो गया. अभी पीसी रिसीव. क्या रिसीव कर रहे हैं? अरे पीसी का वर्किंग चेक करो. कैश रिसीव कर रहे हैं. पीसी देखो ना वर्किंग किया हुआ है. वी आर रिसीविंग कैश, वी आर रिसीविंग इक्विटी शेयर्स. एंट्री बोलो. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakhs. Equity shares in P Limited account debit 1250. पीसी रिसीव हो गया. क्लियर? ये स्टेज पे क्या होगा? ये स्टेज पे क्या होगा? परचेसिंग कंपनी टैली हो जाएगा. ठीक है. विच स्टेप इज ओवर? स्टेप 2. व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप्स बायट नहीं रहेगा तो फंस जाएंगे. एक्सपेंस पेड. डू वी हैव, एक मिनट इसका टोटल दो ना मेरे को. डायरेक्ट आउटर में लिखेगा तो भी चलेगा. इनर आउटर में ही लिखा है तो टोटल नहीं करना है. इनर में है तो टोटल. आउटर में ही लिखा है तो फिर टोटल क्यों कर? एनीवेज यहां तक क्लियर? ओके. एक्सपेंसेस पेड. हाउ मच एक्सपेंसेस? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 5,000. एंट्री बोलो. पहला रियलाइजेशन टू कैश बैंक. सोच रहा है कि बोलना नहीं? कसम खाया है नहीं, आंसर नहीं देंगे. थोड़ा परेशान करो. रियलाइजेशन टू कैश बैंक. कैश बैंक में कहां पे आएगा? बाय व्हाट? कितना? 5,000. डू यू अग्री? Which step is over? Step 3 is over. Step number 4. Disposal of assets and liabilities which are not taken over by purchasing company. अभी चेक करना, आराम से रुकना इधर.
बोलो कौन सा एसेट नहीं लेके जा रहा है? डेटर्स, फिर कैश एंड क्रेडिटर्स। ओके, कैश को डिस्पोज नहीं कर सकते, बट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को डिस्पोज करना पड़ेगा। चलो, डेटर्स रियलाइज हाउ मच? डेटर बुक में कितना था? 80 था, और हमने कलेक्ट कितना किया? 1 मिनट, डेटर अगर परचेसिंग कंपनी नहीं लेके गया तो सेलिंग कंपनी रियलाइज करेगा ना उनके पास से। समझ रहा है ये पॉइंट? सो कितना मिला अपने को डेटर के पास से? 75। एंट्री बोलो। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ मच? सेकेंड इफेक्ट, डन? कोई डाउट? बोलो। क्लियर? नेक्स्ट, डेटर के बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है? 40,000। कोई रिवाइज्ड अमाउंट दिया है क्या? नहीं, मतलब 40 का पूरा 40 पे करेंगे ना। एंट्री, रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे है, पे करेंगे तो डेबिट में आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो कैश बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 40,000। सेकेंड इफेक्ट, कैश बैंक में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। क्लियर एवरीबडी? विच स्टेप इज ओवर? स्टेप नंबर 4। व्हाट इज स्टेप 5? व्हाट इज स्टेप 5? 4 स्टेप्स तो समझा ना। स्टेप 5 पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अभी 1 मिनट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो वर्किंग नहीं, इंफॉर्मेशन चेक करो तो जरा। प्रेफरेंस शेयर वर सेटल्ड एट व्हाट? सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितना, चेक करो। 2 lakhs, बराबर है ना। ये 2 lakhs के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसको 5% प्रीमियम मतलब 5% एक्स्ट्रा पे करना है, करेक्ट, और कैश में पे करना है। एंट्री बोलो, बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। 2 लाख का कैपिटल है प्लस 5%, 2,10,000। डन? अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया। अभी ये स्टेज पे क्या होगा? क्लोज करने का जो भी डिफरेंस आएगा किधर जाएगा? नॉनसेंस, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। उठाएगा सूफियान, उठा के पूछेगा बायट नहीं किया तो। बायट नहीं किया ना तूने, कर क्या है?
पूरा बायट है। ये सेकेंड इफेक्ट बोलो जल्दी। रियलाइजेशन में क्या लिखेगा? 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, हाउ मच? 10,000। बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टैली हो गया, क्लोज हो गया रादर। कौन सा स्टेप कंप्लीट हुआ? स्टेप 5 इज ओवर। एक बार स्टेप 5 हो गया ना, उसके बाद बहुत सिंपल है, सब अकाउंट क्लोज करो, इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दो, इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो जाएगा। सो पहला अकाउंट कौन सा है? क्लोज रियलाइजेशन, गेट प्रॉफिट और लॉस। बोलो, ये प्रॉफिट लॉस खुद तो बताओ हाइला, तुम लोग बताते हैं। 4 लाख, क्रेडिट साइड इज मोर, अग्री? सो देर इज अ प्रॉफिट 4,60,000। हाँ, किधर ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में बाय क्या लिखो? रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या? प्रॉफिट, हाउ मच? 4,60,000। कंफर्टेबल? से यस। चलो, उसके बाद कौन सा अकाउंट बचा? कैश, क्लोज करो। कैश बैंक में क्या है डिफरेंस? टैली हो रहा है 20,000, कितना आ रहा है? 1 लाख। किसको पे करेंगे ये कैश? इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी भी क्लोज करो। वो किसको देंगे? वो तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही देंगे। सब अकाउंट क्लोज करके इक्विटी शेयर होल्डर को दे देने का, सिंपल। हुआ टैली? 1390। हाउ टू रीड दिस अकाउंट? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या पे करने का था? उसका कैपिटल पे करने का था, प्लस ऐड करते जाओ ना जरा, 5 लाख कैपिटल पे करना था, प्लस 280 का जनरल रिजर्व हमें पे करना था उसको, करेक्ट? सो 780 प्लस कैपिटल रिजर्व 1 लाख वी हैड टू पे, 880 प्लस 50 930, करेक्ट? प्लस रियलाइजेशन प्रॉफिट भी देंगे 460, 1390 हुआ, minus preliminary expense because it is negative reserve. So 1360 was payable. How much we paid? 1360. इक्विटी शेयर दिया 12.5 लाख का,
एंड कैश दिया 1,10,000 का. दैट्स इट. दिस इज द इंटरप्रिटेशन. इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या पे करेंगे एक बार रिपीट करो. उनका कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस, और आई कैन से प्लस रियलाइजेशन प्रॉफिट, और नेगेटिव रिजर्व रहेगा तो माइनस करने का. इन अदर वर्ड्स नेट रिजर्व्स पे करेंगे. रिजर्व्स माइनस नेगेटिव रिजर्व. याद रखना कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस रियलाइजेशन प्रॉफिट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे करेंगे? उनका कैपिटल प्लस जो भी डिसाइड हुआ रहेगा वो प्रीमियम. दैट्स इट. ये क्लियर? पक्का? ये क्या कंप्लीट किया हमने? अकाउंट का साइज समझाना कैसे बनाने का. फिट था यू बदो. ओके, आगे बढ़े हम लोग. और क्या पूछा है बोलो. किसका जर्नल बेटा? आ जाओ. जर्नल एंट्रीज. जर्नल इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड. स्टार्ट करो. 1 पेज जर्नल. ठीक है, उधर से स्टार्ट तो कर. स्टार्ट करें. हाउ मेनी. ओके, मैंने 3 पार्ट में एंट्रीज डिवाइड किए थे, याद है? परचेसिंग कंपनी में पहले 3 क्या थे? बेसिक एंट्रीज, फिर 2 एडिशनल एंट्रीज, फिर 5 स्पेशल ट्रांजैक्शन एंट्रीज, जो हमने अब तक नहीं सीखे हैं बिकॉज वो आएगा तभी हम बात करेंगे. करेक्ट. 3 बेसिक एंट्रीज. बोलो फर्स्ट. ये बोलने से याद रहेगा. बोलो. फर्स्ट एंट्री पीसी ड्यू एंट्री, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट. लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड. अमाउंट बोलो. पीसी का अमाउंट आएगा बिकॉज एंट्री किसका है? पीसी ड्यू. अग्रीड? एनी डाउट इन 14,50,000? देखो, डिड यू रियलाइज अगर पीसी रॉन्ग है तो उधर परचेसिंग सेलिंग कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसका प्रॉफिट लॉस भी रॉन्ग आएगा. एंड पीसी रॉन्ग है तो ये सब एंट्रीज भी रॉन्ग हो जाएंगे, पेमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, बहुत कुछ रॉन्ग होता है. तो पीसी विल प्ले बिग रोल इन दिस चैप्टर. इसीलिए बहुत बार 6 मार्क 8 मार्क का सिर्फ पीसी कैलकुलेशन पूछते हैं. बोलेंगे कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, सिर्फ इतना पूछते हैं. देन हाउ टू डील विथ इट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? सेकेंड बोलो. सेकेंड एंट्री क्या रहेगी? पीसी हो गया, ड्यू हो गया. नरेशन लिखो. नरेशन बीइंग पीसी ड्यू. फर्स्ट क्वेश्चन है, नरेशन लिखो. फिर होमवर्क है जो तुम कभी नहीं करेंगे. करेक्ट. पीसी ड्यू क्लियर. अभी पीसी डिस्चार्ज पे करेंगे. किसको पे करेंगे? ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट. liquidators of S limited account debit. टू क्या देंगे? मोड्स ऑफ पेमेंट. कैश बैंक अकाउंट. हाउ मच? 2 lakhs. 2 क्या? इक्विटी शेयर. How many shares? इन बस इधर ही तुम मिस्टेक करेगा. ये लाइफ का रूल है. कल भी मैंने बोला था कैपिटल डिबेंचर ये सब क्या वैल्यू पे आता है? फेस वैल्यू पे. इट इज 1 लाख इंटू 10. डायरेक्टली फिगर्स नहीं डालना. इसलिए ना एक बात याद रखो, जब भी कैपिटल आया डिबेंचर्स आया, यू हैव टू राइट ब्रैकेट.
इफ यू विल राइट ब्रैकेट ना तो ये क्लिक होएगा कि 10 लू के 12.5 लू, विदाउट ब्रैकेट करेगा फंसने वाला है। एनीवे ये क्लियर। अमाउंट बोलो। टू व्हाट? सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना 2.5 का। यार यू दे, कब तक आंसर नहीं देंगे? 3, 3:30 7:30 तक है आज, 7:45 सॉरी, कल का 15 मिनट थोड़ा एक्सटेंड करो। बोलो, इधर तक समझा गया? नरेशन लिंक, पीसी डिस्चार्ज, डन। 2 एंट्री क्लियर। हाँ अभी है ना, ये दिस थर्ड एंट्री विल प्ले बिग रोल। व्हाट इज थर्ड एंट्री? नाटो, बराबर ना? नहीं ऐसे नहीं, नाटो का एंट्री है ना, नेट पेमेंट मेथड रहेगा ना पीसी का, नेट पेमेंट मेथड, तो ये नाटो का एंट्री विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्यों? बैलेंसिंग फिगर या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, क्योंकि ये एंट्री टैली नहीं होएगा। क्यों टैली नहीं होएगा? बिकॉज इसमें एसेट डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज क्रेडिट करेंगे, मतलब नाटो लिखा हमने, एंड फिर टू बिजनेस परचेस लिखेंगे, वो तो पीसी का अमाउंट लिखेंगे। तो नाटो एंड पीसी अगर सेम है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट नेट पेमेंट मेथड रहेगा तो ये सेम नहीं रहेगा, तो ये एंट्री में डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस को क्या बोलेंगे? इधर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। मैनेजेबल। स्टार्ट करूं? अभी देखो, नाटो का एंट्री रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाटो का एंट्री में ही आगे पीछे वाले को पूछ सकता है गुडविल कैपिटल रिजर्व कितना है। पूरा इसका क्रक्स बोलू ना, मतलब एग्जाम में किसी को पूछना है कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो क्या पूछेगा? एक पीसी का अमाउंट, दूसरा गुडविल कैपिटल रिजर्व, अमालगमेशन। सिर्फ डायरेक्ट गुडविल कैपिटल रिजर्व फाइंड करने बोला है तो क्या करते हैं मालूम है? पीसी कैलकुलेट किया, कितना आया था? 1450। उसके ही नीचे नाटो कैलकुलेट करते हैं। एसेट्स टेकन ओवर, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर माइनस रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर, उधर नाटो मिल जाता, फिर कंपेयर करते तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाता। बट इधर पूछा नहीं है कि डिटरमाइन पीसी एंड गुडविल कैपिटल रिजर्व, इसीलिए हमने सिर्फ वर्किंग किया छोटा एंड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। सो हियर वी विल गेट दिस करेक्ट। ये आगे बढ़ो, अभी मेरे को आंसर देना। कौन से एसेट क्या वैल्यू पे टेक ओवर हो रहे हैं? बोलो। गुडविल नाटो में लेने का कि नहीं लेने का? नाटो का एंट्री कर रहे हैं, शुड वी कंसिडर गुडविल इन दैट? देखा, वो थियरी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल विल कम इन नाटो और इट विल नॉट कम इन नाटो, बिकॉज कौन सा मेथड है पीसी का? नेट पेमेंट मेथड है। नेट पेमेंट मेथड में नाटो में गुडविल नहीं आएगा, बिकॉज पीसी एंड नाटो का डिफरेंस गुडविल आएगा, तो ये गुडविल नहीं लेने का। करेक्ट। आप बोलेगा सर ले लिया तो वापस गुडविल आएगा, डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर या कैपिटल रिजर्व आएगा। फिर दोनों तो बता नहीं सकते, वी हैव टू नेट इट ऑन। करेक्ट। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, बोलो टेक ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू 5 lakhs, रिवाइज 750 पे टेक ओवर होगा। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, $750। कंफर्टेबल स्कॉलर्स। आगे क्या लिखा? नेक्स्ट आइटम स्टॉक। स्टॉक कितना? रिवाइज्ड वैल्यू कितना है? 150 पे टेक ओवर होगा। कंफर्टेबल मशीनरी, बुक वैल्यू 250 है,
इधर 2 lakhs है, बोलो। डेटर्स टेक ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, सोनाटो में नहीं आएगा। फर्नीचर 120 है, 3 लाख। ओ कैश टेक ओवर हो रहा है, नहीं हो रहा है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिक्टिशियस एसेट टेक ओवर होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा, ओनली रियल एसेट्स विल बी टेकन ओवर। अग्रीड? सो ये टेक ओवर नहीं होगा। चलो अभी लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल टेक ओवर होगा क्या? नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा। रिजर्व्स नहीं होगा। डिबेंचर्स, डिबेंचर टेक ओवर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे? रिवाइज्ड वैल्यू पे। चेक करो रिवाइज्ड वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया। सो इट विल बी टेकन ओवर एट क्रेडिटर्स टेक ओवर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। डेबिट में आ रहा है डिफरेंस। हाउ मच? इधर ऐसे एच टिक मार्क कर दो या सर्कल कर दो। मतलब नाटो कितना हुआ? 1250। 1250 का नेट एसेट टेकन ओवर एक्सक्लूडिंग गुडविल, पर हमने पे किया 1450, तो 2 लाख एक्स्ट्रा पे किया, दैट इज फॉर गुडविल। सच बोलो, समझा क्या? पक्का? ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हर क्वेश्चन में तुम इधर फंसने वाले, याद रखना। लिखो उधर बीइंग नाटो, फुल फॉर्म लिखने का एग्जाम। नेटो ना, नेटो, नीटो क्या बोलते हैं? नीटो। डन? 1 2 3 डन। बोलो एंट्री नंबर 4 क्या रहेगा? डिस्चार्ज ऑफ आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज ऑफ सेलिंग कंपनी। जो हमने लाइबिलिटी टेक ओवर किया, पहले कौन सा टेक ओवर किया वो देख लो। एक ही टेक ओवर किया, डिबेंचर्स। उसका कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं है, तो डिबेंचर डिस्चार्ज नहीं करेंगे। चलो उसके बाद नंबर 5, एंट्री नंबर 5, रियलाइजेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय परचेसिंग कंपनी। इधर कौन पे कर रहा है? तो वो नहीं आएगा। दैट्स इट, हो गया। क्वेश्चन समझा क्या? सी, आपको थियरी याद है ना, तो ये सब कर पाएंगे आप, क्योंकि अदरवाइज मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे हर सम में। वी डोंट वांट दैट, बी इंडिपेंडेंट। थियरी बायट करो, कल थियरी सीखा है, बायट होना चाहिए और फिर अप्लाई करना है, दैट्स इट। समझा यू एवरीबॉडी? क्लियर? आगे बढ़ो। शैल आई प्रोसीड? The All India Company Limited agrees to acquire as a going concern the business of the Presidency Company Limited. बोलो ऑल इंडिया कंपनी कौन है? प्रेसिडेंसी कंपनी कौन है? On the basis of vendor's balance sheet on 31st March 2017, which is as follows: authorized capital
25,000 shares of 50 each. Issued capital 20,000 shares of 50 each. Called up capital 20,000 shares of 30 each. Reserve fund, creditors, P&L. Freehold property, machinery, stock, 6% government paper, debtors, less RDD, 220 and bank 30. Manageable. The All India Company Limited took over what? Of the subject to the retention out of such asset of 13,500 to provide for cost of liquidation, income tax, etc. Understood? बोलता है all assets and liabilities will be taken over except one asset, which is such type of asset which is required to provide cost of liquidation, income tax and to satisfy dissenting shareholders. बोलता है एक ऐसा एसेट नहीं लेके जा रहा है जो लिक्विडेशन एक्सपेंस, इनकम टैक्स एंड डिसेंटिंग शेयर होल्डर को पे करने के लिए काम आए. बोलो क्या नहीं लेके जा रहा है? ऐसा क्या नहीं लेके जाएगा जो ये सब पे करने के लिए काम आएगा? कैश बैंक. कितना है बैंक? 30 में से कितना नहीं लेके जा रहा है? तो कितना लेके जा रहा है? 13,500 is not taken over. 16,500 is taken over. ये क्लियर? पक्का? अब बोलेगा क्या फर्क पड़ता है? टेक ओवर किया तो रियलाइजेशन में जाएगा, एंड अगर टेक ओवर नहीं हुआ है तो कैश बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में आए. आगे, द कंसिडरेशन फॉर द सेल इज द अलॉटमेंट टू द शेयर होल्डर्स इन द वेंडर कंपनी. एक कंसिडरेशन मतलब पीसी का बात कर रहा है. क्या रेशियो? 1 शेयर ऑफ 100 each, 50 paid up at 60 each. In All India Limited, for every 3 shares held in Presidency Company Limited. In short, payment का डिटेल दी है. करेक्ट. हाउ टू रीड इट, हाउ टू इंटरप्रेट इट हम बात करेंगे. पेमेंट का डिटेल दिया है. पीसी कौन सा मेथड रहेगा? नेट पेमेंट मेथड. मार्केट वैल्यू कितना है शेयर का? 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, बरोबर ना? 50 पेड अप है, मतलब शेयर फुल्ली पेड अप है, पार्टली पेड अप है? पार्टली पेड अप है. पार्टली पेड अप शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना है? 60. ये गया कि ये गया? 100 इज व्हाट? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू. पेड अप कितना है? 50. अब तक 50 का ही कॉल हुआ है, बट ये पार्टली पेड अप शेयर है ना, इसका मार्केट में क्या वैल्यू है? 60. समझा कि नहीं समझा? आगे, द लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी हैज पेड आउट ऑफ 13,500 रिटेन्ड. 13,500 मतलब जो 13,500 साइड में निकाल के रखा है ना, उसमें से पे किया. क्या पे किया? लिक्विडेशन एक्सपेंस 2,500, इनकम टैक्स 7,500 एंड डिसेंटिंग शेयर होल्डर 100 शेयर्स ऑफ 35 रुपीज पर शेयर. टोटल करो. 13,500 आ रहा है क्या? 2,500 प्लस 7,500, 10,000 प्लस 3,500, 13,500 केप्ट असाइड फॉर पेमेंट ऑफ 3 आइटम्स एंड तीनों पे कर देंगे तो कैश कंप्लीट हो जाएगा. सेल एंड परचेस ये समझा नहीं. सेल एंड परचेस किसका? सेल एंड परचेस वर कैरिड थ्रू इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. किसका सेल एंड परचेस? बिजनेस का. Standard is applicable to purchase and sale of business. Amalgamation purchase and sale of business का है. Agreed? Pass what? For दोनों का जर्नल. थोड़ा समझा क्या? टोटल कितने इक्विटी शेयर्स हैं? 20.
कितने डिसेंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंटिंग शेयर होल्डर? डिसेंटिंग शेयर होल्डर मतलब क्या? आइला तो पूछेंगे नहीं? पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो पूछो, पता है तो आई विल अज्यूम कि ओके ठीक है. Yes, Aryan, what do you mean by dissenting shareholder? Don't agree for absorption in this case, absorption of a company. Dissenting and assenting दो होते हैं. Assenting means they agreed for this absorption, and dissenting means they don't agree for this absorption. They will not be, they are not ready to get the shares of purchasing company. वो शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि नहीं, हमको ये परचेसिंग कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए, हम ये एब्जॉर्प्शन अग्री नहीं कर रहे हैं. दैट शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. अग्रीड? तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को पीसी कैसे पे करेंगे? फिर वो शेयर्स तो लेंगे नहीं, तो फिर उसको पे कौन करेगा? सेलिंग कंपनी खुद पे करेगा. किधर से पे करेगा? तो कैश में पे करेगा. इसलिए तो वो 13,500 में से पे कर रहा है. क्लियर? पक्का? चलो गुड, आगे बढ़े. पीसी का अमाउंट फाइंड कर सकता है कि तुम लोग? आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स इफ यू कैन कैलकुलेट. ओके, मेथड कौन सा है वो डिसाइड हुआ? कौन सा मेथड? नेट पेमेंट मेथड. वेरी गुड. कितना है पीसी? पीसी कितना है? 4,20,000. ओके, 4,20 रुपीज. ओ, और इनको आपको भी देव सेम आया, और वो मैडम को? चलो एनीवेज, आपको आया? नहीं आया? ओके. नेहा आपको? नहीं. सुफियान? सेम 420. ओके ओके, we'll go for it. It seems wrong, but let us talk about it. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अभी. आर्यन बेटा ध्यान दो. 420 आया ना आपको? और एक आंसर आया. कितना है? नहीं बता. अरे बता. तो मेरे को बोलने दे ना. गलत तू क्यों डिसाइड कर रहा है? पेपर में तो लिख के आएगा ना, आई सी आई विल डिसाइड. 420 है. सेकेंड वाला क्या आया था? थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है. चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं. सुन लो इधर. हाउ टू डील विथ इट, पे अटेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? How many equity shares are there? Dissenting shareholders holding how many shares? 100 shares. $19,900 shares.
क्लियर। इसको कौन पे करेगा? ये 100 शेयर्स को कौन पे करेगा? बरोबर है। टू बी सेटल्ड बाय सेलिंग कंपनी इटसेल्फ। ये सेलिंग कंपनी अगर पे करेगा इसको तो ये पीसी में आएगा कि नहीं? हाँ, इसीलिए तो डेफिनेशन सिखाया था। पीसी का डेफिनेशन क्या है? मेड बाय द परचेसिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। दिस इज नॉट पेड बाय परचेसिंग कंपनी, दिस इज पेड बाय सेलिंग कंपनी इटसेल्फ। इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी, करेक्ट। एंड इसको कौन पे करेगा? टू बी सेटल्ड बाय परचेसिंग कंपनी। ये पीसी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहाँ तक क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट परचेस कंसिडरेशन। अंडर विच मेथड? आगे बढ़ो। नेट पेमेंट मेथड। सी, पेमेंट मेथड रहेगा ना तो ऐसा एक टेबल बनाते हैं हम। पार्टी कैलकुलेशन अमाउंट मोड। पार्टी कैलकुलेशन अमाउंट मोड क्या हो गया? हाँ, क्या बोल रहा है? गर्मी हो रहा है, अभी तूने बंद करवाया। एनीवेज, करना है तो कर ले, चलो ठीक है। आगे बढ़ू मैं, इधर ध्यान दो फटाफट, चलो। कैन आई से वी डोंट हैव प्रेफरेंस शेयर इन दिस क्वेश्चन, वी हैव ओनली इक्विटी शेयर। सो इक्विटी शेयर होल्डर को हम पे करेंगे। पीसी एक्चुअली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का? पीसी किधर दिया है? AS14। तो AS14 इज फ्रॉम उस पॉइंट ऑफ व्यू, परचेसिंग कंपनी। तो पीसी शुड थिंक फ्रॉम परचेसिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। अग्री? या आगे बढ़ो। कौन से शेयर होल्डर को परचेसिंग कंपनी पे करेगा? क्लियर? रेशियो दिया है, पढ़ो। कंसिडरेशन फॉर द सेल इज द अलॉटमेंट टू द शेयर होल्डर्स इन द वेंडर कंपनी ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर सेल्ड। मतलब जिसके पास ओल्ड 3 शेयर्स रहेगा ना, उसको नया 1 शेयर मिलने वाला। How many old shares are there?
6633 डेसिमल में आएगा, मतलब फ्रैक्शन में रहेगा। अभी शेयर्स का पेमेंट फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, क्यों ज्यादा दूं? So 6633 shares will be given. एक शेयर कितने में देगा? इंटू वॉट? आपने क्या किया? इंटू 60 के 100, तो 6 लाख जैसा कुछ आया था ना आपको, 100 किया इसीलिए आया, बट 100 इज ओके। सो क्या लेना चाहिए लॉजिकली? 60 शुड बी कंसिडर्ड। 397 980 रहेगा। हाँ, 6633 equity of rupees 100 each, बरोबर ना? हंड्रेड इच क्या लिखा? 50 पेड अप, मतलब पार्टली पेड अप शेयर। issued at ₹10 premium. Clear? ये फ्रैक्शनल शेयर्स का क्या करना है? सो रिमेंबर दिस, वेन एवर फ्रैक्शनल शेयर्स विल कम नो, शुड बी सेटल्ड इन कैश। तो फ्रैक्शनल शेयर्स कैश में सेटल करेंगे। क्यों? एसेंटिंग फ्रैक्शन किसका है? एसेंटिंग का। डिसेंटिंग को तो वो लोग पे कर रहे हैं ना, सेलिंग कंपनी, वो तो पीसी में आएगा ही नहीं। बोलो, यहां तक समझा? Done everybody? You understood this PC? आगे बढ़ो, जर्नल करना है।
डन। स्टार्ट करो। चलो, सेलिंग कंपनी स्टेप्स पे बात करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, चलो फर्स्ट एंट्री। स्टेप 1 क्या था? जल्द, मैं ओरली बोलेगा, फटाफट लिखने का। बोलो। स्टेप 1, एम्प्टी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल तो इंफॉर्मेशन ही होता है सिर्फ। अग्रीड? इशूड कैपिटल भी इन्फो होता है। कॉल्ड अप ये 20,000 शेयर्स ऑफ 30 ईच। एंट्री बोलो। कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, एंट्री। ओके वेट, रिजर्व फंड किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। पीएनएल किधर जाएगा? चलो क्रेडिट साइड। कंबाइन करूँ कि अलग अलग करना? कंबाइन लिख दो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6 lakhs. Next line bracket, 20,000 into 30. Reserve fund account debit, 1,25,000. $1,25,000. P&L account debit, 60,000. 2. Equity shareholders account. To equity shareholders account. How much? 785. ये समझा? नरेशन नहीं चाहिए ना? तो चाहिए, ठीक है। नंबर 2, अभी बोलो और क्या बच गया? लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर्स लिखो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सेलिंग कंपनी का बुक है, समझ रहा है ना? स्टेप 1 में हम लोग बैलेंस शीट खाली करो। क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन 75,000। चलो एसेट में आओ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, रुको, मशीनरी, स्टॉक, 6% गवर्नमेंट पेपर मतलब इन्वेस्टमेंट है। डेटर्स, ये आरडीडी किधर जाएगा? रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे जाएंगे, करेक्ट। उसका एंट्री बाद में करते हैं। और फिर बैंक, बैंक में जो टेक ओवर हुआ वो रियलाइजेशन में जाएगा, तो जो भी रियलाइजेशन में जाएगा उसका कंबाइंड एंट्री करते हैं, करेक्ट। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,50,000। 2,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 50,000। to stock 3 lakhs. To 6% government paper 10,000. To debtors 2,30,000. नहीं, कौन है वो?
कैसे करने का? एक मिनट, क्या क्या लिखा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू 6% गवर्नमेंट पेपर, टू डेटर्स एंड टू बैंक 16,500. जो टेक ओवर हो रहा है वो रियलाइजेशन में जाएगा. टोटल करो. 856,500 रियलाइजेशन डेबिट. समझाइए. आरडीडी किधर जाएगा? एंट्री लिखो. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. हुआ यहाँ पर? क्या कंप्लीट किया? व्हाट इज स्टेप 2? लिखो. पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड. ऑल इंडिया कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ऑल इंडिया कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कितना था पीसी? 398 ना? 3,98,000. ड्यू क्लियर. अभी पीसी रिसीव. चेक करो मोड में क्या क्या मिल रहा है. उधर नहीं, वर्किंग किया है. पीसी तो वर्किंग से मिलेगा ना बेटा. इक्विटी शेयर्स एंड कैश. लिखो. इक्विटी शेयर्स इन ऑल इंडिया कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट. $397,980 बरोबर ना. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 20 टू वन. परचेसिंग कंपनी का जो नाम है ऑल इंडिया कंपनी लिमिटेड. डन. क्या कंप्लीट किया? पीसीडीयू भी हो गया, रिसीव्ड भी हो गया. व्हाट इज स्टेप 3? कितना है? लिक्विडेशन 2,500 है ना? पे किया. एंट्री बोलो. टू कैश बैंक. रियलाइजेशन टू कैश बैंक. एंट्री नंबर 7. लिखो. रियलाइजेशन टू कैश बैंक 2,500. ये समझा? Which step is over? Third. What is step 4? Disposal of assets and liabilities which are not taken over. तो सारे assets liabilities take over हो रहे हैं. बोला है all assets and liabilities taken over except cash. बट फिर वो कैश में से क्या पे कर रहे हैं? लिक्विडेशन एक्सपेंस. वो तो पे कर दिया हमने अभी. फिर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स पे करेंगे उसका एंट्री आएगा. इनकम टैक्स इज अवर लाइबिलिटी. हम टैक्स पे कर रहे हैं. दैट एंट्री विल कम. एंट्री बोलो.
ओके मेरे को बोलो इनकम टैक्स रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है क्या अनरिकॉर्डेड? इनकम टैक्स बैलेंस शीट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बैलेंस शीट में इनकम टैक्स पेएबल ऐसा कुछ है नहीं, मतलब रिकॉर्डेड है क्या अनरिकॉर्डेड? अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करते हैं तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में सुना रहेगा आपने, करेक्ट? कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे किया तो लॉस होता है, तो वैसे ये रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। इनकम टैक्स इज नॉट देयर इन अवर बुक्स एंड वी आर पेइंग दिस लाइबिलिटी, सो देयर विल बी अ लॉस। अग्री? ये लॉस का क्या करेंगे, कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे? हर चैप्टर का जो स्पेशल अकाउंट बनाते हैं ना उसमें डेबिट होता है, करेक्ट? ये चैप्टर में कौन सा स्पेशल अकाउंट बना रहे हैं? ओके किसके बुक में है? सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी के बुक में है, तो सेलिंग कंपनी के बुक में एक स्पेशल अकाउंट कौन सा बनाते हैं? नॉमिनल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। इफ इट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता था, बट इफ इट इज अमालगमेशन और एब्सॉर्प्शन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। किसके बुक में है? सेलिंग कंपनी में। लिखो रियलाइजेशन टू कैश बैंक 7500। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे किया, समझाइए कि अगर रिकॉर्डेड होता तो? रिकॉर्डेड होता तो पे नहीं करेंगे? हाँ तो एंट्री तो भी यही एंट्री आता, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। सो रिकॉर्डेड पे करो क्या अनरिकॉर्डेड पे करो, एंट्री सेम ही आएगा। क्लियर? विच स्टेप इज ओवर? स्टेप नंबर 4, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डन। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5 क्या है बोलो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है। ये सब में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है क्या? है कि नहीं है? नहीं है, बट उसके जगह पे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है ना? डिसेंटिंग को पे करना है कि नहीं करना है? हमें करना है। सेलिंग कंपनी खुद पे करेगा ना, 100 शेयर्स पे 35 रुपीज़ बराबर 6। एंट्री बोलो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को पे करना है। लिखो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 100 shares into 35। 3500। क्लियर? चलो क्या कंप्लीट किया? स्टेप नंबर 5। अभी स्टेप 6 क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने का। सो कैलसी पे क्लोज कर सकता है कि बनाओ? करेगा ना? डेबिट हुआ तो माइनस करने का, क्रेडिट हुआ तो प्लस करने का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। कितना? 383,500 लॉस आया। ओके लॉस किधर ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। सो लिखो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रियलाइजेशन।
समझा कि नहीं समझा? एवरीबडी क्लियर? अभी स्टेप नंबर 6 इज ओवर. अभी स्टेप 7, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना. तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या मिला था? ओके, किधर चेक करने का? तो उसका मोड चेक करो ना. उसके लिए क्या मिला था? इन कैश. ये 2 मिला था ना, तो दोनों दे दो उसको. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन ऑल इंडिया कंपनी लिमिटेड. and 2 cash bank. ट्वेंटी 3,98,000 बरोबर. कौन सा स्टेप कंप्लीट किया? स्टेप नंबर 7. अभी ये स्टेज पे इक्विटी शेयर होल्डर टैली होना चाहिए. चेक करो हो रहा है कैलसी पे. फर्स्ट एंट्री में ये है देव. इक्विटी शेयर रिजर्व सब क्रेडिट किया है देख. लॉस है माइनस होएगा. हो रहा है टैली. मतलब ये जर्नल जो किया वो करेक्ट है. सो चेक कर लेने का इक्विटी शेयर होल्डर टैली होना चाहिए. हैव यू अंडरस्टूड दिस? या क्या कंप्लीट किया? किसका जर्नल कंप्लीट किया? सेलिंग कंपनी. अभी किसका जर्नल करेंगे? परचेसिंग कंपनी. स्टार्ट करो. हाउ मेनी एंट्रीज बोलो पहले? 3 बेसिक. ये तुम आंसर दो यार. आंसर देगा तो कैसा है, थोड़ा मजा आए. वन साइडेड तो आई डोंट लाइक. एनीवेज 3 बेसिक एंट्रीज, 2 एडिशनल, 5 स्पेशल. 3 बेसिक. फर्स्ट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? लिक्विडेटर्स ऑफ प्रेसिडेंसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट.
अमाउंट बोलो। 398 था ना पीसी। सेकेंड एंट्री पीसी पे करेंगे। लिक्विडेटर्स ऑफ प्रेसिडेंसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,98,000। टू बोलो क्या पे कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर 6। कितना है ओए पीसी उधर देखने का। सिक्स 633 शेयर्स है ना, इनटू व्हाट 50 के 60। वेरी गुड। 10 रुपए का क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 6633 शेयर्स इनटू व्हाट 10। ये दो तो 50 कितना आ रहा है, और 66330 बराबर है। टैली तो करना ही पड़ेगा, 20 रुपए का कैश भी दे रहे हैं। बोलो पीसी पे किया वो समझा एवरीबॉडी। थर्ड एंट्री क्या है, नाउ दिस नाटो विल प्ले बिग रोल। क्या क्या टेक ओवर कर रहे हैं, हाँ सो सब लिखते जाओ। क्या वैल्यूज पे, रिवाइज दिया ही नहीं है, सब बुक वैल्यू पे ही लेंगे। लिखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 2,50,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 lakhs। 6% गवर्नमेंट पेपर अकाउंट डेबिट 10,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,30,000। बरोबर। बैंक अकाउंट डेबिट 16,500। एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ो। 2 क्यों छोड़ा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी रहेगा उधर आएगा। 2 क्रेडिटर्स 75,000।
2 RDD 10,000, 2 business purchase 3,98,000, कितना आया कैपिटल रिजर्व? सो 2 कैपिटल रिजर्व 373,500, क्रेडिट में आया ना बैलेंसिंग फिगर? बोलो, एवरीबडी क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? कम ऑन यार, समझाइए। आपका जर्नल भी क्लियर? ये क्वेश्चन में नया क्या? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, दैट वाज द न्यू एरिया। डन एवरीबडी? अभी सुनो, वो स्पेशल ट्रांजैक्शंस में आ जाओ। जगह छोड़ा था ना? ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट्स सिर्फ किसके बुक में आएगा? परचेसिंग कंपनी, और किसी के भी बुक में ये नहीं आएगा। मतलब सेलिंग कंपनी के बुक में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ग्रीन? स्पेशल ट्रांजैक्शन। स्टार्ट करो। 5 एंट्रीज हो गए थे, दिस इज 6th वन। ओके, थिंक एंड टेल मी। मैं पी लिमिटेड है, मैंने एस लिमिटेड को अक्वायर किया ऑन 1st April 2025। बिफोर दैट, मे बी ऑन 26th of March, मैं पी लिमिटेड सेलिंग कंपनी को कुछ गुड सेल किए क्रेडिट बेसिस पे। तो मेरे बुक में सेलिंग कंपनी डेटर रहेगा, एंड सेलिंग कंपनी के बुक में परचेसिंग कंपनी क्रेडिटर रहेगा। 31 मार्च को जब भी बैलेंस शीट बनाया, अभी 31 मार्च को बैलेंस शीट दोनों ने बना लिया, एक के बुक में डेटर है, दूसरे के बुक में क्रेडिटर है। 1st April को आई एम टेकिंग ओवर इट्स बिजनेस, तो इसके बुक में जो क्रेडिटर है वो मैं हूँ, मैंने बिजनेस टेक ओवर किया, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेरे बुक में आ गए, उसमें क्रेडिटर में मेरा ही नाम है।
और डेटर में एस लिमिटेड का नाम है जो लिक्विडेट हो गया, अभी हम दोनों एक हो गए. दिस इज कॉल्ड एज इंटर कंपनी डेटर्स क्रेडिटर्स. दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल ओइंग्स. क्या करने का, अभी मैंने बिजनेस अक्वायर कर लिया, मेरे बुक में ऑलरेडी एस लिमिटेड डेटर के लिस्ट में है. अभी मैंने जो बिजनेस अक्वायर किया उसमें क्रेडिटर आए, क्रेडिटर में मैं मेरा खुद का ही नाम है, पेएबल टू अवर सेल्फ. एंड जो डेटर में एस लिमिटेड है उसमें पेएबल टू अवर सेल्फ ओनली. वाई? बिकॉज अभी पी एन एस एक ही हो गए. सो पे टू अवर सेल्फ, रिसीवेबल फ्रॉम अवर सेल्फ. Can I say that receivable and payable, debtors and creditors should get cancelled? This is called as cancellation of intercompany debtors creditors. But cancel कभी करने का? After taking over. बुक में लेने के बाद creditors and debtors will get cancelled. गया के गया? लिख दो इधर, cancellation क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिटर्स कैंसिल करेंगे. किसके बुक में ये एंट्रीज आने वाले हैं? परचेस इनकम, क्रेडिटर्स टू डेटर्स. Cancellation of intercompany bills. बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल एक दूसरे के ऊपर पहले ही ड्रॉ हुआ है, बिफोर एब्जॉर्प्शन ड्रॉ हुआ है. एक के बुक में बिल्स रिसीवेबल रहेगा, दूसरे के बुक में बिल्स पेएबल रहेगा. क्या करने का? आफ्टर टेकिंग ओवर कैंसिल कर देने का. एंट्री क्या है? बिल्स पेएबल विल गेट कैंसल्ड, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल. क्लियर? Cancellation of what? Intercompany loans. Before 31st मार्च एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को लोन दिया. समझा? एंट्री बोलो. एक के बुक में लोन टेकन रहेगा, एक के बुक में लोन गिवन रहेगा. अभी मैंने बिजनेस टेक ओवर कर दी, सो दोनों मेरे बुक में आ गए. क्या करने का? कैंसिल. लाइबिलिटी को डेबिट करने का. सो लाइबिलिटी मतलब लोन टेकन. एंट्री विल बी लोन टेकन टू लोन गिवन.
क्लियर, मैनेजेबल, स्टॉक कैंसिल नहीं करना है। क्या कैंसिल करना है बेटा? प्रॉफिट। वो भी कौन सा प्रॉफिट? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एंट्री बोलो। ओके, मीनिंग समझना है, थोड़ा देख लो इधर। परचेसिंग कंपनी है, सेलिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी ने 10,000 के कॉस्ट वाला गुड्स 5,000 प्रॉफिट ऐड किया, 15,000 में बेचा। अग्री? अभी ये स्टॉक एस लिमिटेड के गोडाउन में पड़ा है 31 मार्च को, करेक्ट। 1 अप्रैल को हम एस लिमिटेड को टेक ओवर करेंगे, तो इसका 31 मार्च का बैलेंस शीट रहेगा, उसमें स्टॉक रहेगा। वो स्टॉक में ये 15,000 का गुड्स रहेगा। यस और नो? एंड 1 अप्रैल को वी आर टेकिंग ओवर दिस बिजनेस। अभी बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं, तो मैं पी लिमिटेड में कितने में टेक ओवर करेगा वो स्टॉक? 15,000 में स्टॉक मेरा, वो मेरा ही स्टॉक है एक्चुअली, वो मैं 15 में टेक ओवर करेगा। अब ये इसमें 5,000 रुपीज क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर ये एस ने थोड़ा गुड्स बाहर बेच दिया रहता तो प्रॉफिट रियलाइज हो गया रहता, तो कैंसिल करने का जरूरत नहीं है, करेक्ट। बट एस ने ये गुड्स मार्केट में अब तक बेचा ही नहीं। अभी मैं पी और एस एक हो गए, तो हम दोनों का कॉस्ट था कितना? अवर कॉस्ट वाज ओनली 10,000, नॉट 15,000। So we have to eliminate what? 5,000 rupees unrealized profit. Did you understand this? ये सब वापस आगे भी आएगा। I hope you understood all 4 concepts. Clear? क्या एंट्री आएगा? एक और चलो आगे बात करते हैं। तो 15,000 का गुड्स है, उसमें से अगर 50% गुड्स उसने बेच दिया आगे, एस लिमिटेड ने किसी को बेच दी, तो स्टॉक में कितना रहेगा? 50% बेच दिया, तो अभी स्टॉक में 7,500 रहेगा, तो हम 7,500 ही टेक ओवर करेंगे। तो 7,500 में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा? तो 50% रहेगा। 15,000 में 5,000 था ना, 7,500 में 2,500 अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा। वी हैव टू एलिमिनेट प्रॉफिट, नहीं, वी हैव टू एलिमिनेट व्हाट? अनरियलाइज प्रॉफिट इन इंटरकंपनी स्टॉक। ये क्लियर? पक्का? अगर पूरा स्टॉक बेच दिया रहेगा तो अनरियलाइज है ही नहीं, नो नीड टू एलिमिनेट। एंट्री बोलो, ये प्रॉफिट किस में इंक्लूडेड है? तो स्टॉक में से निकालना पड़ेगा, स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। कितना? जितना अनरियलाइज रहेगा उतना। क्लियर? पक्का? डेबिट किसको?
किसको डेबिट करेंगे बोलो? ओके, स्टॉक को हम कम करेंगे। ओके, टेक ओवर कितने में करेंगे वो तो बोलो। लेट अस से कुछ स्टॉक एस लिमिटेड ने कुछ बेचा ही नहीं है, पूरा 15,000 का स्टॉक पड़ा, तो हम पूरा 15,000 का स्टॉक टेक ओवर करेंगे, बराबर है? ओके, ये 15,000 का स्टॉक जो टेक ओवर करेंगे उसमें से 5,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक से निकालेंगे। तो स्टॉक कम होगा, स्टॉक कम होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बोलो, लॉस होगा। अब ये लॉस किसके कारण हो रहा है? अमालगमेशन के कारण हो रहा है। दिस इज कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस विल बी डेबिटेड इन विच अकाउंट? गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो भी पीसी नाटो का डिफरेंस रहेगा ना वो लेने का। ये समझा कि नहीं समझा? सो गुडविल और कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक। तुम लोग 15-15 मिनट्स का 2 ब्रेक लेना चाहोगे कि एक ही हाफ एन आवर का लेना है ना? ये क्लियर, मैनेजेबल? लास्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। हैव यू हर्ड अबाउट स्टैट्यूटरी रिजर्व्स? Okay, there are 4, I can say 5 statutory reserves: investment allowance reserve, development rebate reserve, export profit reserve, foreign project reserve, करेक्ट? ऐसे कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व हमने किधर तो बात किया। सो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, if any of the statutory reserve is there in selling company's books, if any of the statutory reserve is there in selling company's books, then purchasing company will not take over that reserve, but purchasing company is supposed to create that reserve in its books of accounts. ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो मैंने पढ़ाए थे आप लोग को, अगर याद रहेगा तो, I think so in company final accounts, in reserves and surplus schedule note, we have considered all these reserves. वो reserves में statutory क्यों बोला है? Because these are created as per Income Tax Act 1961 and they have lock-in period. Lock-in period रहता है। सेलिंग कंपनी ने खुद के बुक में अगर वो रिजर्व क्रिएट किए तो दे हैव टू मेंटेन इट फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। लेट अस टेक एग्जांपल कि 10 इयर्स के लिए उनको मेंटेन करना है, करेक्ट? सो 10 इयर्स के लिए मेंटेन करना है, 6 साल हो गया, अभी अमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कंपनी बंद हो रहा है, तो ऑब्लिगेशन किस पे ट्रांसफर होगा मेंटेन करने का? परचेसिंग कंपनी। तो परचेसिंग कंपनी वो रिजर्व टेक ओवर नहीं करेगा, बट वो रिजर्व खुद के बुक में क्रिएट करेगा और मेंटेन करेगा फॉर रिमेनिंग पीरियड। अग्रीड? या? सो व्हाट इज अवर फिफ्थ वन, मतलब लास्ट वन क्या लिख रहा है मैं? ये क्रिएट करना है, टेक ओवर नहीं करना है, याद रखना। क्रिएशन ऑफ statutory reserve, क्रिएट करना है इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी।
क्लियर? लिखो इधर एक दो स्टेटमेंट लिखो. If any of the following statutory reserves appears in the books of selling company, then purchasing company should create it. करेक्ट. नेक्स्ट लाइन. लिस्ट याद है आपको? नहीं? लिख लो. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, export profit reserve, foreign project reserve, स्लैश करके लिखो हाउसिंग प्रोजेक्ट रिजर्व. समझाइए. और वो डेवलपमेंट रिबेट लिखा है ना, उधर भी स्लैश करके लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व. ये रिजर्व्स अगर सेलिंग कंपनी के बुक्स में रहेंगे तो परचेसिंग कंपनी क्या करेगा? क्रिएट करेगा. भी क्रिएट करने का एंट्री क्या आएगा? बोलो क्या एंट्री करेंगे? स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. Statutory reserve will be credited and one new account will be opened, special account will be opened, and that account is amalgamation adjustment reserve account. Amalgamation adjustment reserve account debit करें. जैसे ही लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा ये एंट्री रिवर्स कर देंगे. बैलेंस शीट में किधर दिखेगा? स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस में. अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व किधर दिखेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस करके बताएंगे. क्लियर? या दैट्स इट. क्या कंप्लीट किया? स्पेशल ट्रांजैक्शंस. अभी सेकेंड पार्ट और क्या हो सकता है? परचेसिंग कंपनी में जर्नल हमने सीख लिया, और क्या पॉसिबल है? बैलेंस शीट. नाउ विच बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर हियर? शेड्यूल 3 बैलेंस शीट. Schedule 3 Division 1. I hope you remember.
Schedule 3 Division 1 Part 1 Balance Sheet of Companies Act 2013. Correct? This balance sheet we had already learned in company final accounts. So I am assuming you all remember that. अभी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, मतलब व्हाट वुड बी योर थॉट प्रोसेस? है जगह, दो चार लाइन लिखना है, नहीं तो जवा दो, ऊपर टॉप मार्जिन में लिख दो. इफ इट इज absorption, if it is absorption, so how to prepare new balance sheet? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ओके, बाय द वे न्यू बैलेंस शीट बनाना किसका है, कौन से कंपनी का? बरोबर ना, तो परचेसिंग कंपनी का न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे. तो हम बेस किसको लेंगे? परचेसिंग कंपनी का ओल्ड बैलेंस शीट को हम बेस लेंगे, बिकॉज एब्जॉर्प्शन में परचेसिंग कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी. and plus or minus journal entries. Purchasing company का new balance sheet is equal to purchasing company का old balance sheet, purchasing company का old balance sheet plus or minus purchasing company का journal entries. आपको चाहिए तो लिख लो इधर, ये P लिमिटेड है, ये भी P लिमिटेड है, ये भी P लिमिटेड है. यहाँ तक क्लियर? पक्का? अगर ये अमालगमेशन रहेगा एंड एक्सटर्नल रिको रहेगा, तो न्यू बैलेंस शीट इज इक्वल टू व्हाट? अमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिको में जो परचेसिंग कंपनी होता है वो नया कंपनी होता है ना, तो उसका ओल्ड बैलेंस शीट तो रहेगा ही नहीं, तो जो भी उसका जर्नल पास करेंगे वो नया बैलेंस शीट में जाएगा. जर्नल एंट्रीज ऑफ परचेसिंग कंपनी. चलो डन. ये दिस इज द वे बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर परचेसिंग कंपनी. क्लियर है? डन. थियरी हमने कंप्लीट किया. किसका थियरी कंप्लीट किया? परचेसिंग कंपनी का. ओके, सी आई होप यू अंडरस्टूड द बैकग्राउंड कि अभी क्या करना है, कैसे करना है. इधर तक क्लियर है सबको? ब्रेक लेते हैं. करेक्ट. ब्रेक के बाद वी विल प्रोसीड विथ एटलीस्ट 3 मैक्सिमम 4, 3 to 4 प्रॉब्लम्स. करेक्ट. Which method? नेट पेमेंट मेथड. करेक्ट. स्टार्ट करो.
Balance sheet of Srishti Limited as on 31st March 2014 was as follows. Equity share capital, export profit reserve, सुना हुआ लग रहा है, स्टैट्यूटरी रिजर्व करने का क्या क्या करेंगे? सेलिंग कंपनी के बुक में क्या करेंगे? सेलिंग कंपनी के बुक में क्या करेंगे? नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर में ही जाएगा. सेलिंग कंपनी में देयर इज नो चेंज. परचेसिंग कंपनी में क्या करेंगे? क्रिएट के टेक ओवर क्रिएट करेंगे. आगे जनरल रिजर्व पीएनएल 9% डिबेंचर क्रेडिटर्स मैनेजेबल. गुडविल दिया है. गुडविल कौन सा वैल्यू है? ध्यान दे आयरन. गुडविल विच वैल्यू? बुक वैल्यू है. करेक्ट. सेलिंग कंपनी का बुक है, बुक वैल्यू है. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट स्टॉक डेटर कैश बैंक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मैनेजेबल. अनु लिमिटेड अग्रीड टू एब्सॉर्ब द बिजनेस ऑफ सृष्टि लिमिटेड with effect from 1st April 2014. Purchase consideration settled by Anu Limited as agreed. 4,50,000 equity shares of 10 each issued by Anu Limited by valuing its shares at 15 rupees per share. ये समझा? And cash payment कितना? 2.50 for every share in Srishti Limited. Can I say this information is for payment to shareholders? बोलो. Yeah. The issue of such an amount of, ये जो भी पेमेंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो है ही नहीं, तो इक्विटी को पे करेंगे. द इश्यू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुली पेड अप 8% डिबेंचर्स इन अनु लिमिटेड एट 96 एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 9% डिबेंचर इन सृष्टि लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. क्या लिखा है? पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स. अभी नहीं सोचने का, जब सॉल्व करेंगे तभी सोचेंगे. बट ये डिबेंचर होल्डर का पेमेंट का इन्फो दिया है. डू यू अग्री विद दिस? या अनु लिमिटेड विल टेक ओवर व्हाट? कम ऑन कम ऑन कम ऑन. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या परसेंट? 100% मोर देन द बुक वैल्यू. स्टॉक एट 7,10,000. डेटर्स एट देयर फेस वैल्यू सब्जेक्ट टू आरडीडी कितना? 5%. क्लियर? कैन आई से ये सबका रिवाइज्ड वैल्यू दिया है. रिवाइज्ड वैल्यू इज गिवन. द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इज हाउ मच? लिक्विडेशन कॉस्ट ऑफ सृष्टि लिमिटेड इज टू बी रीइंबर्स्ड बाय अनु लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000. मतलब अनु कौन है? परचेसिंग कंपनी. करेक्ट. तो परचेसिंग कंपनी 50,000 रीइंबर्स करेगा. मतलब परचेसिंग कंपनी विल बेयर 50,000, सेलिंग कंपनी विल बेयर 25,000. डू यू अग्री? आगे डेटर्स ऑफ सृष्टि लिमिटेड इंक्लूड्स व्हाट? कम ऑन. ड्यू फ्रॉम अनु लिमिटेड. कैन आई से इंटर कंपनी डेटर क्रेडिटर क्या करने का? क्या करने का? कैंसल. किसके बुक में? परचेसिंग कंपनी के बुक में कैंसिल करेंगे. सेलिंग कंपनी में नो इफेक्ट, कुछ नहीं करने का इसका. सेलिंग कंपनी के बुक में कुछ नहीं करना है. जो नॉर्मल डेटर क्रेडिटर का करते हैं वैसे ही करना है. अग्रीड? यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ सृष्टि. कौन है? सेलिंग कंपनी. बुक्स क्लोज करना है, लेजर बनाने का. करेक्ट. एंड पास व्हाट? कम ऑन. इन द बुक्स ऑफ अनु लिमिटेड. बोलो. मैनेजेबल? पक्का? आगे बढ़ू? आगे बढ़े? राइट. सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? पीसी परचेस कंसिडरेशन अंडर
स्टार्ट करो। किसको पे करना है? इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है ना? क्या पे करना है? 4,50,000 इक्विटी शेयर्स देना है। चेक कर लो क्या भाव पे देंगे। करो मल्टीपल, कितना आ रहा है? $4,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आगे बोलो जल्दी जल्दी। इशूड एट क्लियर। कितना? एक मिनट, सॉरी। ओल्ड शेयर्स कितने थे? 3 lakhs। 3 lakhs शेयर्स थे ओल्ड। इंटू 2.5, 750। इतना समझा क्या? $75 lakh तक क्लियर एवरीबॉडी? मैनेजेबल? आगे बढ़ूँ मैं? चलो, अभी क्लोज द बुक्स ऑफ सृष्टि लिमिटेड। सृष्टि लिमिटेड कौन है? क्या क्या बनेगा बोलो? रियलाइजेशन, फिर इक्विटी शेयर होल्डर, कैश बैंक, परचेसिंग कंपनी मतलब अनु लिमिटेड। मोड्स में क्या क्या है? इक्विटी शेयर इन अनु लिमिटेड, दैट्स इट। 5 अकाउंट बनेगा, बनाओ।
Ready? Done? थोड़ा ग्रिप आया क्या चैप्टर पे? समझा? Done? आगे बढ़ो. बोलो. What is step number 1? Selling company. Come on. Step number 1. Empty the balance sheet. Start करो फटाफट. Equity share capital किधर जाएगा? Which account? Equity shareholder account. Which side? Export profit reserve. General reserve P&L. Debentures creditors. बराबर है.
गुडविल, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर, चारों किधर जाएगा? गुडविल आएगा नहीं आएगा? आएगा। ऑल बैलेंस शीट आइटम्स। कैश बैंक का क्या करेंगे? कैश बैंक का क्या करने का? Yes, Aryan, what is your opinion on this? पूरा? ओके, कैश, हाँ, कुछ नहीं दिया तो entire cash will be taken over. Yeah, now pay attention. See, out of 280, I hope you know this, actual cost of liquidation is 75, whereas purchasing company will reimburse only 50,000. तो 25,000 तो अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा ना. So ये 25,000 is not taken over. बाकी का कैश 255 टेक ओवर हो. In short, 25,000 we have to keep aside to meet that expenditure. बाकी का 2,55,000 का कैश will be taken over. ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? आर्यन, क्लियर? इधर अभी बोलो, ये 25,000 कैश इज नॉट टेकन ओवर, तो वो किधर जाएगा? वो कैश बैंक में जाएगा. क्लियर? और 255 किधर जाएगा? इट इज टेकन ओवर. सो रियलाइजेशन. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किधर जाएगा? Preliminary expense is our fictitious asset. It is negative reserve. Who will bear this? Equity shareholders will bear this. 50,000. यहाँ तक क्लियर? पक्का? आई होप इधर तक समझा एवरीबडी. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेप इज ओवर? स्टेप नंबर 1. व्हाट इज स्टेप 2? इसका टोटल दो ना जरा. 70. अभी बोलो. आगे PC due and PC received. एंट्री बोलो PC due. Due means receivable.
रिसीवेबल फ्रॉम परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट मतलब अनु लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. 75 lakhs. I hope you understood this. पक्का? अभी बोलो आगे. पीसीबी हो गया. अभी क्या करेंगे? पीसी रिसीव. कैसे रिसीव हो रहा है? किधर? हाँ, पीसी का मोड देखने का. इक्विटी शेयर है और दूसरा कैश. एंट्री बोलो. इक्विटी शेयर्स इन अनु लिमिटेड अकाउंट डेबिट. To Anu Limited 67,50,000. Cash bank account debit to Anu Limited 7,50,000. Anu Limited में buy cash bank buy equity shares in Anu Limited 67,50,000. यहाँ तक क्लियर? क्या किया? पीसी ड्यू, पीसी रिसीव. बोलो इसके बाद. एक मिनट. पीसी ड्यू एंड रिसीव हो गया तो परचेसिंग कंपनी तो टैली हो जाएगा. 70. Which step is over? Step number 2. समझा स्कॉलर्स? स्टेप 3 बोलो. स्टेप 3 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस चेक करो कितना है. टोटल पे कितना किया? हमने 75 पे किया और फिर रीइंबर्स कितना हो रहा है? 50. पहले 75 पे किया. एंट्री बोलो. नेट एंट्री करेंगे तो भी चलेगा बट इंस्टीट्यूट 2 एंट्री करता है. पहले पे किया 75. सेकेंड इफेक्ट दे दो. करेक्ट. हाँ, अभी इसमें से 50,000 रीइंबर्स हो रहा है. सो एंट्री बोलो. इधर तक समझा है? अच्छा, we are done with step number 3. What is step 4?
come on, disposal of assets and liabilities which are not taken over. I think so everything is taken over. ये कैश टेक ओवर नहीं हो रहा है, वो तो कैश अकाउंट में डाल के रख दिए. करेक्ट. स्टेप नंबर 5, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है क्या? नहीं है. दैट्स इट. स्टेप नंबर 6, क्लोज ऑल अकाउंट्स. रियलाइजेशन क्लोज करो. How much? Profit now? एक डाउट है मेरे को, पूछूं? आरडीडी क्यों कंसिडर नहीं किया? तो रिकॉर्डेड नहीं करेक्ट, बट तो क्या, तो स्टेप 1 में नहीं आएगा, बट फिर कंसिडर तो करना चाहिए. वाई वी डिडंट कंसिडर आरडीडी? ओके, सुन लो इधर. दिस आरडीडी इज फॉर रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ डेटर्स. बराबर है. रिवाइज्ड वैल्यू कहाँ पे कंसिडर करेंगे? तो परचेसिंग कंपनी जब भी नेट एसेट टेक ओवर करेगा उसमें कंसिडर करेंगे. करेक्ट. परचेसिंग कंपनी विल टेक ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट रिवाइज्ड वैल्यू, सो आरडीडी विल बी कंसिडर्ड देयर. दिस इज वन एक्सप्लेनेशन. सेकेंड एक्सप्लेनेशन, ये जो पीसी है ना 75 lakhs का, उसमें सबका पेमेंट हो चुका है. सारे एसेट्स लाइबिलिटीज का पेमेंट है उसमें, so which includes everything. So we are not supposed to record revised value in this particular account, realization account, because 75 lakhs is purchase consideration for revised value of assets and liabilities only. Agreed? 31 lakhs आया. चलो डन. कैश किसको देंगे? इक्विटी शेयर किसको देंगे?
क्लियर? टैली समझा कि नहीं समझा? एनी डाउट? अभी जर्नल एंट्रीज करना है। स्टार्ट करो। चलो, अनु लिमिटेड परचेसिंग कंपनी में 3 बेसिक एंट्रीज आएगा। स्टार्ट करें क्या? देव, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, टू लिक्विडेटर्स ऑफ सृष्टि है ना, अमाउंट बोलो 75। कंफर्टेबल? फर्स्ट एंट्री क्लियर? लिक्विडेटर्स ऑफ सृष्टि लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बोलो पेमेंट कैसे हो रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मेनी शेयर्स? 4,50,000। एक शेयर कितने का? फेस वैल्यू 10। टू कैश बैंक, बोलो 750 था ना? एनी डाउट इन फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री? कहाँ से लिया ये सब? मोड किधर से लेने का? वर्किंग से। पीसी का वर्किंग किया है ना जो, वही। बोलो एनी डाउट इन फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री? नो। अभी थर्ड एंट्री, मेरे साथ रहना, जोड़े रहे जो। थर्ड एंट्री स्टार्ट करो। बोलो पीसी विच मेथड? तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व या एंट्री में आएगा। बैलेंसिंग फिगर, अग्री? लिखते जाओ, मैं डिक्टेट करेगा, तुम लोग लिखेगा। बी विथ मी। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, बस रुक जाओ। लिखा? सोचने का ऑलवेज। बुक में क्या वैल्यू है? 30 lakhs एंड टेकन ओवर एट 100% मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब 60 lakhs। सो लिखो 60 lakhs। नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो 30 lakhs प्लस 100%। डू यू अग्री विथ दिस? पक्का?
सेकेंड, और क्या टेक ओवर हो रहा है? ये एंट्री सच में इंपॉर्टेंट है, इधर मिस्टेक किया गुडविल कैपिटल रिजर्व रॉन्ग होता है, करेक्ट। सेकेंड बोलो, और क्या है? स्टॉक। स्टॉक का रिवाइज्ड वैल्यू दिया है क्या? 7,10,000, लिखो स्टॉक अकाउंट डेबिट 7,10,000। लिखा। डेटर्स 1,80,000, डेटर्स का रिवाइज वैल्यू है क्या? है, आरडीडी दिया है, बट आरडीडी क्रेडिट करेंगे, सो डेटर्स 180। अभी बोलो, कैश टेक ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना हो रहा है? 255, लिखो कैश बैंक अकाउंट 2,55,000। लिखा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टेक ओवर होगा क्या? नहीं, नेगेटिव रिजर्व है, अग्रीड। लाइबिलिटी में आ जाओ, अभी एक लाइन छोड़ के लिखो, 2 आरडीडी 9,000, ब्रैकेट में लिखो 1,80,000 इंटू 5%। क्लियर? 9,000 लिखा आरडीडी। अभी लाइबिलिटी बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल टेक ओवर होगा? नहीं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व? नहीं। जनरल रिजर्व? नहीं। पीएनएल? नहीं। डिबेंचर आएगा, लिखो 29% डिबेंचर। बस आता थांबा, ए रुक। 29% डिबेंचर, 9% debenture will be taken over at what value? So it will be taken over at revised value. एक आइटम्स है ना, बैलेंस शीट से लेने का, फिगर्स के लिए नीचे इन्फो चेक करना पड़ता है रिवाइज्ड वैल्यू के लिए। अभी चेक करो, डिबेंचर का बुक वैल्यू कितना है? 5 lakhs। वी वांट रिवाइज्ड वैल्यू। एक मिनट सुन लो, इधर स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर हाउ टू थिंक, हाउ टू डिसाइड दैट वी विल चेक इट आउट। पढ़ो स्टेटमेंट। The issue of such an amount of fully paid up 8% debenture in Anu Limited at bolo 96 as is sufficient to discharge 9% debenture in Srishti Limited at a premium of 20%. What is the revised value of debenture? आर्यन, देव, क्या सोच रहा है पहले वो तो बोलो। सोचना क्या है रिवाइज्ड वैल्यू के लिए? क्या सोचने का, पहले सुन लो ना। एक स्टेटमेंट है, व्हाट वी हैव टू थिंक। कोई भी लायबिलिटी का रिवाइज्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या सोचने का? हाउ मच टू पे, एक स्टेटमेंट, कितना पे करना है, कैसे पे करना है इंपॉर्टेंट नहीं है ये स्टेज पे। कितना पे करना है, जितना पे करना है वो उसका रिवाइज्ड वैल्यू, बराबर है। पढ़ो, इश्यू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ 8% डिबेंचर इन अनु लिमिटेड, मतलब 8% नया डिबेंचर इश्यू करेंगे 96 रुपीज में, मतलब 4% डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे। कैसे पे करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ये स्टेज पे, कितना पे करना है वो इंपॉर्टेंट है। कितना पे करना है मिल गया, दैट इज द रिवाइज्ड वैल्यू। Sufficient to discharge 9% debenture in Srishti Limited at a premium of 20%, premium of 20%, 9% डिबेंचर को 20% एक्स्ट्रा पे करना है, तो 5 लाख प्लस 20% 6 लाख। तूने इमीडिएटली वही तो किया था, सो आंसर इज 6 lakhs। ब्रैकेट में लिख दो 5 लाख प्लस 20%, सो अमाउंट 6 lakhs। डू यू अग्री विद दिस? आएगा आगे, इससे बारी बारी एडजस्टमेंट है। सोचना क्या है, कितना देना है, जितना देना है वो हमारा रिवाइज्ड वैल्यू लायबिलिटी का 6 lakhs। एवरीबडी गॉट दिस? नेक्स्ट लाइन 2, क्रेडिटर्स।
1 लाख, रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है ना, 1 लाख, डन। 2 ए 2 ये भूलना नहीं, बिजनेस परचेज, नहीं तो बैलेंसिंग फिगर ऑलवेज क्रेडिट में आएगा, हद हो गई यार। 2 बिजनेस परचेज कितना था, 75 लाख। हाँ अभी फाइंड करो क्या आ रहा है। 10,64,000, 10,64,000, हाँ देखो गुडविल 10,64,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 1064, बैलेंसिंग फिगर मार्क कर दो। सुफियान को आया क्या, क्यों, प्लस माइनस तो करना है बेटा, इंडियन कैल्सी यूज करने का, चाइना लेके आता है, कैशियो है, जापान वाला है ना, कैशियो तो जापान है ना। इंडिया सुपर, आपका फिलीपींस मतलब उधर ही हुआ ना बाजू में, चाइना के आगे पीछे, कुछ भी क्यों ऐसा, ऐसे आंसर तो देती नहीं है, कुछ भी बोल देती है जोर से। चलो हुआ यहां तक, आगे बढ़े हम लोग। नंबर 3 4 4, एक मिनट, 3 तक क्लियर, चलो 4, 3 entries are done, 4, क्या करना है फोर्थ में, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे, याद है 9%, ये देखो ये कैसे डिस्चार्ज करना है देख लो, 9%। अभी यहाँ पे सोचने का कि कितना पे करना, रादर कैसे पे करना है, कितना पे करना है वो डिसाइड हो गया, 6 लाख। सो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख, ये कहाँ से आया, थर्ड एंट्री से, थर्ड एंट्री में क्रेडिट किया है, अभी इसको पे करने चाहेंगे तो फोर्थ एंट्री में डेबिट होगा। कैसे पे करेंगे, %8 डिबेंचर्स, करेक्ट, क्या प्राइस पे इश्यू कर रहे हैं 8% डिबेंचर, 96, तो डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं। एंट्री समझा क्या पहले, सुफियान को एंट्री नहीं समझा, क्या डाउट आया बोल। 9% डिबेंचर कैंसिल करना है ओल्ड वाला, उसको नया 8% डिबेंचर दिया, जो भी 8% डिबेंचर दे रहा है वो 4% डिस्काउंट पे दे रहा है, 96 रुपीज़ में दे रहा है, तो डिस्काउंट हमारा लॉस होगा तो डेबिट करेंगे। हुआ यहाँ तक, हाँ अभी कैसे फाइंड करने का, हाउ टू फाइंड द आंसर, 6 lakhs डिवाइडेड बाय, बोलो, ओके आई विल गिव यू लाइक दिस, सोचो, एक डिबेंचर क्या भाव पे इश्यू हो रहा है, इधर आर्यन बेटा मेरे से बात करना, आर्यन क्या डाउट है तेरे को,
हो गया। वन डिबेंचर इज इशूड एट 96 रुपीज, मतलब एक डिबेंचर अगर मैं देगा तो 96 का पेमेंट हुआ, बराबर है। आप 9% डिबेंचर है, मैं 8% डिबेंचर देगा तेरे को, क्या भाव में देगा? 96 रुपीज़ में देगा। तो एक डिबेंचर देगा तो 96 का पेमेंट हुआ, दो डिबेंचर देगा तो 192 का पेमेंट हुआ, तीन डिबेंचर देगा तो 288 का पेमेंट हुआ, करेक्ट। सो मैं एक डिबेंचर देगा तो 96 का पेमेंट हुआ, ऐसा मेरे को तेरे को 6 लाख का पेमेंट करना है। कितना डिबेंचर इशू करेगा? हाँ, सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 96। मैं डायरेक्टली तभी मैं पूछा ना डिवाइड किससे करने का, तो आंसर आया 100, तो वो रॉन्ग था। It should be divided by issue price and issue price was 96. That was कितना आ रही है? 6250 debentures will be issued. एक डिबेंचर का फेस वैल्यू रहेगा 100, so it would be 6,25,000. तो 25,000 का क्या आएगा? डिस्काउंट। यू कैन डू लाइक दिस, 6250 डिबेंचर इंटू 4 रुपया डिस्काउंट है। डन। फिफ्थ, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेंगे, करेक्ट। एक कच्चे रियल लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेंगे। नाउ लिक्विडेशन एक्सपेंस परचेसिंग कंपनी कितना पे कर रहा है? 50,000। एंट्री बोलो, कल पढ़ाया था ना, गुडविल टू कैश फाइन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। गुडविल टू कैश फाइन 50,000। पांच एंट्री हो गया। नाउ 5 स्पेशल ट्रांजैक्शन एंट्रीज बोलो। इंटर कंपनी, cancellation of intercompany debtors creditors, do we have that? Yes, 30,000 है ना, सो एंट्री क्या आएगा? $30,000। बोलो क्लियर यहाँ तक? मैनेजेबल। इंटर कंपनी बिल्स है क्या? डू वी हैव इंटर कंपनी बिल्स? नहीं। देन इंटर कंपनी लोन्स? नहीं। उसके बाद इंटर कंपनी स्टॉक? नहीं। उसके बाद स्टैच्यूटरी रिजर्व है क्या? 850 का स्टैच्यूटरी रिजर्व क्रिएट करो। एंट्री बोलो।
amalgamation adjustment reserve account debit to what? Export profit reserve 8,50,000. Clear? That's it. That's it. This is the end of question number 9. I hope everybody understood this. Come to question 6. Question number 6. Mark this question as important. I will read question number 6. Following is the balance sheet of Anil Limited. As on 31st March 2017, share capital 20,000 equity shares of 100 each fully paid up 20 lakhs. Reserve fund 5 lakhs. एक मिनट, रिजर्व फंड किधर जाएगा? देखो, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका जर्नल करने बोला है? परचेसिंग का जर्नल बोला है, सेलिंग का कुछ नहीं बोला है. तो सेलिंग कंपनी का लेजर अगर होमवर्क करना है तो कर सकता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन वी हैव. इसका लेजर आप होमवर्क करना, किसका? सेलिंग कंपनी का. बाकी क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो तो मैं करवा देगा. ओके, अगर आप बंद करना है बंद कर देना. देव बंद करना है, बंद कर. हाँ, डन. सुनो, अगर आप लेजर होमवर्क करते हो तो ये बैलेंस शीट, एम्प्टी द बैलेंस शीट करना पड़ेगा. तो कौन सा आइटम किधर जाएगा वो डिसाइड कर लेते हैं. अकॉर्डिंगली यू कैन पुट आइटम्स इन योर लेक्चर का. करेक्ट. 20,000 इक्विटी शेयर, बोलो किधर जाएगा? होल्डर, रिजर्व फंड, विच साइड? क्रेडिट साइड. सिंकिंग फंड. सिंकिंग फंड होता क्या है? इट इज वन ऑफ द रिजर्व. इट इज वन ऑफ द रिजर्व. मैंने रिजर्व का लिस्ट लिखवाया था ना, उसमें जाओ. उसमें लास्ट, आई थिंक सो, मैंने लास्ट DRR लिखवाया था. देखो तो जरा, उसके स्लैश करके सिंकिंग फंड लिखवाया. क्या लिखा है? क्या
DRR स्लैश करके सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व करके मैंने लास्ट वाला कुछ लिखवाया रहेगा, उसमें स्लैश करके सिंकिंग फंड। इसको सिंकिंग फंड भी बोलते हैं। ओके, होता क्या है सिंकिंग फंड, सुना है कभी? सुना है? नहीं? एनीवेज, sinking fund is one of the reserve. Agreed? Hello? Yeah. Workmen accident and compensation fund. देख लो, वो भी था डिविजिबल प्रॉफिट के लिस्ट में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट, ये भी हमारे लिए क्या है? रिजर्व। तो ये रिजर्व किधर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। बट उसमें 9,000 का लायबिलिटी है, तो 41,000 इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, 9,000 रियलाइजेशन में जाएगा। मतलब क्या मालूम है? वर्कर का एक्सीडेंट के लिए या कॉम्पनसेशन देने के लिए रिजर्व बना के रखा है, किसी का एक्सीडेंट होगा तो हम इसमें से कॉम्पनसेशन देंगे। तो 9,000 हमारा लायबिलिटी है जो रियलाइजेशन क्रेडिट, और 41,000 हमारा रिजर्व है क्योंकि वो तो यूज ही नहीं किया अब तक, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। बोलो, इधर तक समझा? डेवलपमेंट रिजर्व, ये किधर जाएगा? स्टैट्यूटरी रिजर्व सेलिंग कंपनी में किधर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। एंड परचेसिंग कंपनी क्या करेगा? क्रिएट करेगा। स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड किधर जाएगा? क्या बोल रहा है? सुना है स्टाफ प्रोविडेंट फंड का? कहाँ जाएगा? ओके, रिजर्व है कि लायबिलिटी है? इट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो किधर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन क्रेडिट। लोन फ्रॉम मुकेश, रियलाइजेशन क्रेडिट। हम कौन है? बराबर है। लोन फ्रॉम मुकेश लिमिटेड, रियलाइजेशन क्रेडिट। 7% डिबेंचर, रियलाइजेशन क्रेडिट। गुडविल, रियलाइजेशन डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट राइट, स्टॉक, इंडेटर, इन्वेस्टमेंट, सब रियलाइजेशन डेबिट। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। आगे चेक करना पड़ेगा कि कितना टेक ओवर हो रहा है, कितना टेक ओवर नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंगली इफेक्ट देंगे। बराबर है? यहां तक क्वेश्चन समझा क्या? मुकेश लिमिटेड एब्सॉर्ब्ड अनिल लिमिटेड। On the date of its above balance sheet, मुकेश लिमिटेड एब्सॉर्ब्ड अनिल लिमिटेड। मुकेश कौन है? अनिल कौन है? बराबर है। The terms agreed were as under. First, payment of cost of absorption not exceeding rupees 8,000 by मुकेश लिमिटेड। मतलब कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंस। मुकेश लिमिटेड कितना पे करेगा? 8,000, करेक्ट, मैक्सिमम। उससे ज़्यादा हुआ तो बाकी का अनिल लिमिटेड पे करेगा। 634 पढ़ो। एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? तो इसमें से 2,000 अनिल लिमिटेड पे करेगा एंड 8,000 मुकेश लिमिटेड। सो कैन आई से अनिल के पास उतना पैसा है क्या? कितना है? तो 2,000 will not be taken over, 28 will be taken। समझा कि नहीं समझा? क्लियर? फर्स्ट हो गया, सिक्स्थ भी हो गया, चेक कर। सेकेंड, रीपेमेंट ऑफ 7% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5% इन कैश बाय मुकेश लिमिटेड। Can I say this is payment to debenture holder?
नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एट 18 लाख, मशीनरी 13 लाख. कैन आई से रिवाइज्ड वैल्यू दिया है. पेमेंट ऑफ 15 रुपीज पर शेयर इन कैश, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को. पर शेयर बोला तो शेयर होल्डर को ही पे करेंगे ना. एंड अलॉटमेंट ऑफ 1/7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each fully paid up and 5 equity shares of 10 each fully paid up for every 4 equity shares. मतलब ये क्या है बेटा? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. दोनों इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है. अब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है वो क्वेश्चन में दे दिया है. सो इट विल बी विच मेथड ऑफ पीसी? नेट पेमेंट मेथड. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आगे 6 हो गया. 7, स्टॉक ऑफ अनिल लिमिटेड वैल्यूड एट 56,000 फ्रॉम मुकेश लिमिटेड. ओके, विच कंपनी इनवॉइसेस एट कॉस्ट प्लस 25%. कैन आई से इंटर कंपनी स्टॉक? किसने किसको बेचा है? मुकेश लिमिटेड परचेसिंग कंपनी है, उसने अनिल लिमिटेड सेलिंग कंपनी को बेचा है. करेक्ट. सो सेलिंग कंपनी के स्टॉक में अभी भी वो गुड्स पड़ा है, तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा, उसको एलिमिनेट करेंगे. डू यू अग्री विद दिस? या आगे, द डायरेक्टर्स ऑफ मुकेश लिमिटेड डिसाइडेड टू क्रिएट प्रोविजन. हाउ मच? 5% on sundry debtors. So can I say this for revised value of debtors? Correct. Contingent liabilities of bills discounted rupees 1 lakh of Anil Limited settled by 20,000. So contingent liability of Anil Limited settled by Mukesh Limited. Okay, तो डायरेक्ट मुकेश लिमिटेड के बुक में एंट्री करेंगे. Creditors, intercompany debtor creditors. Past journal entries in the books of Mukesh Limited. मुकेश कौन है? परचेसिंग कंपनी. दैट्स इट. बोलो, इधर तक कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 6. सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? स्टार्ट करो. इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या क्या पे करेंगे? कौन सा इन्फो है इसके लिए? 15 रुपीज कैश पे करेंगे. सो 20,000 शेयर्स हैं टू 15 रुपीज. आगे
जिसके पास 4 ओल्ड इक्विटी शेयर्स है उसको एक नया प्रेफरेंस शेयर मिले, यह है ना वो अलॉटमेंट ऑफ 17% प्रेफरेंस शेयर, 5 इक्विटी शेयर अगेंस्ट 4। सो जिसके पास 4 इक्विटी शेयर एक प्रेफरेंस शेयर, टोटल 20,000 इक्विटी शेयर, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज, 5,000 7%, issued at par। और क्या देंगे? जिसके पास 4 ओल्ड शेयर्स हैं उसको 5 नया शेयर मिलेगा। $25,000 into 10 rupees, clear everybody? यहां तक समझ आ गया?
स्टार्ट करो। अभी आ गया ना, इसलिए भाव नहीं देंगे। हाँ हाँ, ब्रेक दिया तो सही है भैया। देखो नंबर 1, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, to liquidators of Anil Limited. $10.50. लिक्विडेटर्स ऑफ अनिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,52। अभी बोलो मोड्स ऑफ पेमेंट में क्या क्या है। पहला क्या था, कितना था, टू, बोलो पार पे था ना ये, कितना था, नंबर 3, स्टार्ट करें। नाटो, लिखो, बोलो गुडविल आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। आगे चलो लिखते जाओ फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 18 lakhs, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 13 lakhs, land and building account debit 18 lakhs, plant and machinery 13 lakhs, patent rights account debit 3 lakh 50, stock account debit 2 lakhs, debtors debit 4 lakhs, investment debit 1 lakh, cash bank debit 28,000, इतना समझा, एक लाइन छोड़ के। 2, RDD 4 lakh into 5% 20,000,
4 लाख इंटू 5% 20,000। अभी लाइबिलिटीज चेक करो, इक्विटी शेयर नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, सिंकिंग फंड नहीं आएगा। ये लिखो, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन एक्सीडेंट 9,000। डेवलपमेंट रिजर्व नहीं आएगा। स्टाफ प्रोविडेंट फंड 1,50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 140। लोन फ्रॉम मुकेश लिमिटेड आएगा कि नहीं, टेक ओवर होगा कि नहीं? So loan from Mukesh Limited 4 lakhs. To 7% डिबेंचर्स। क्या वैल्यू पे लेने का बोलो? रिवाइज्ड वैल्यू पे लेंगे। रिवाइज्ड कितना है? सो बुक वैल्यू वॉज 10 लाख प्लस 5% प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है। सो ब्रैकेट में लिखो 10 लाख प्लस 5%, 10,15,000। चेक करो, टू बिजनेस परचेज। $1359 कैपिटल रिजर्व आ रहे सबको। 2 कैपिटल रिजर्व, $13,59,000। कितना कैपिटल रिजर्व? 1359। क्लियर? डन विथ 3 एंट्रीज या फोर्थ क्या बोलो अभी? डिस्चार्ज ऑफ आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। कौन सा था आउटसाइडर्स लाइबिलिटी? देखो क्या क्या टेक ओवर किया है, थर्ड एंट्री में चेक करो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करना है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड नहीं करना है, क्रेडिटर्स नहीं करना है, लोन नहीं करना है, डिबेंचर्स करना है, रीपे करना है कैश में। 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। सेवन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 10,50,000। और कोई लायबिलिटी पे करना है क्या? यस, कंटिंजेंट लायबिलिटी पे करना पड़ेगा।
कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 1 लाख सेटल्ड एट 20,000. सुना है इसके बारे में? कंटिंजेंट लाइबिलिटी सुना है या कंटिंजेंट लाइबिलिटी वेव्ड ऑफ हुआ, एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? नो एंट्री. पे ऑफ हुआ, एंट्री. प्रॉफिट के लॉस, लॉस एंट्री बोलो. कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 20,000. Either goodwill or capital reserve will be debited. तो पीसी नाटो का डिफरेंस क्या था? तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व था, तो वी विल डेबिट कैपिटल रिजर्व. क्लियर? समझा यहाँ तक? और कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना है? नहीं करना है. चलो नेक्स्ट, लिक्विडेशन एक्सपेंस. हाउ मच वी आर पेइंग? Purchasing company is paying 8,000. So entry will be capital reserve account debit to cash bank 8,000. Clear? Next, 5 special transactions. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इंटरकंपनी डेटर्स क्रेडिटर्स है क्या? लास्ट में है, देख लो. 50,000 कैंसिल करो. क्रेडिटर्स टू डेटर्स. नेक्स्ट, इंटरकंपनी बिल्स है क्या? इंटरकंपनी बिल्स नहीं है. नेक्स्ट, इंटरकंपनी लोन्स है क्या? लोन कैंसिल करो. How much it was? इंटरकंपनी लोन्स कैंसिल हुआ. अब इंटरकंपनी स्टॉक है क्या? है. तो स्टॉक पूरा कैंसिल करने का कि प्रॉफिट कैंसिल करने का? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल गेट कैंसिल्ड. So capital reserve to stock 56,000 रुपीज का स्टॉक है. अनसोल्ड स्टॉक. कॉस्ट प्लस 25% में सेल किया था, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट था. आता है ये 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन आईपी. 56,000 इंटू 1/5 कितना आ रहा है? 11,200. Manageable. After intercompany stock, statutory reserve. Do we have? Yes. Amalgamation. Adjust.
डन, बोलो यहाँ तक हो गया और कोई ट्रांजैक्शन बच गया चेक कर लो, सब हो गया। फर्स्ट डन, second debentures done, third revaluation done, fourth, fifth done, sixth actual expense done, stock done, RDD done, and these two done. Okay, done. That's it. I hope you understood this question. Question 6 हुआ ये। Question number 8. Question number 8. Read this question, one of the good question. Yeah, shall we? The following balance sheets of P Limited and Q Limited as at 31st March 21 is given here. P Limited, Q Limited, equity and liabilities. Schedule 3 balance sheet is given. ये 2 बार प्रिंट हुआ है, ये कैंसिल करो। Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, note number 1. You can check note number 1. Equity share capital, preference share capital. Reserves and surplus 3 lakh 2 lakh. Non-current liabilities, current liabilities. Next, non-current assets, PPE, non-current investments, current assets, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents. They have given bifurcation of trade receivable and trade payables. Trade receivable includes debtors and bills receivable. Trade payable includes creditors and bills payable. Fair enough? हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? ये टेबल तक क्लियर है? See now what is important in this question, you know, this paragraph. This paragraph is new one. PPE of both the companies are to be revalued at 15% above book value, upward revaluation. Both the companies are to pay what? 10% equity dividend, preference dividend already paid. So can I say there is an upward revaluation in PPE and equity dividend paid by both the companies? अभी क्या लिखा है? आफ्टर द अबाउ ट्रांजैक्शंस आर गिवन इफेक्ट टू, मतलब ये दोनों का इफेक्ट देने के बाद पी लिमिटेड विल एब्सॉर्ब क्यू लिमिटेड। तो ये दो जो एडजस्टमेंट दिए है ना, उसको क्या बोलते हैं मालूम है? एडजस्टमेंट बिफोर एब्सॉर्प्शन। मतलब पहले ये दो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बाद में एब्जॉर्प्शन के लिए जाएंगे।
Clear? 5 information given. First one पढ़ लो. 8 equity share will be issued by P Limited against 6 shares of Q Limited. This is payment to equity shareholder. 10% preference shareholder of Q Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference share of 100 each at par. This is payment to preference shareholders. 12% debenture holders of Q Limited are to be paid at 8% premium by 12% debenture issued at discount. This is payment to debenture holders. 30,000 is to be paid by P Limited to Q Limited for liquidation expenses. Creditors of Q Limited include 10,000 due to P Limited. Can I say 30,000 liquidation expense P Limited purchasing company will bear, and sundry creditors due from P Limited मतलब intercompany debtors creditors. Inventory in trade and debtors are taken over at 5% less than their book value. Okay, fair enough. यहाँ तक समझा. Prepare what? Statement of मतलब PC calculate करना. Statement of consideration payable by P Limited. Then P Limited का journal. P कौन है? Purchasing का journal and purchasing का balance sheet. This is our requirement. ठीक है? Manageable. Start करें. क्या नया पार्ट है ये क्वेश्चन में? Adjustment before absorption. Question number 8. बोलो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? Revaluation of PPE. PPE of both the companies are to be revalued at 15% above book value. 15% से बढ़ा. करेक्ट. एंट्री बोलो. PPE अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व होना चाहिए, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं दिया है. यहाँ पे वर्ड यूज किया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो आई विल पुट इन रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनली. 7 लाख into 15%, 1,05,000.
क्लियर। एंड सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है? इक्विटी डिविडेंड पे 10% इक्विटी डिविडेंड। एंट्री बोलो, डिविडेंड देते किस में से? प्रॉफिट्स में से, अग्री? मतलब रिजर्व्स में से डिविडेंड देंगे ना, दो एंट्री कर सकते हैं, इक्विटी डिविडेंड टू कैश बैंक एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी डिविडेंड। क्या करूं, नेट करूं? रिजर्व्स एंड सरप्लस फेयर में जर्नल करेंगे तभी दो एंट्री कर देंगे। ये मेरे को क्या है, बैलेंस शीट में पहले इफेक्ट्स देने पड़ते हैं। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस टू कैश, कितना परसेंट? 10% ऑफ वॉट? इक्विटी कैपिटल 6 lakhs। क्लियर। अभी क्या करेंगे? ये जो ऊपर दो ट्रांजैक्शन हुआ उसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट्स देना है? क्योंकि जो बैलेंस शीट दिया है दैट इज बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस शीट, सो विद दीज एडजस्टमेंट्स वी हैव टू कंसीडर। पीपी में ऐड कर देंगे, सो एक इफेक्ट आएगा, ऐड टू पीपी, ये इफेक्ट्स आएंगे। चलो पीपी में ऐड कर दो, इधर ये रहा, प्लस 1,05,000 प्लस 37,500 रिजर्व 45 एंड 7,500 रिजर्व में भी ऐड कर दो,
प्लस 45 7 कैश में से 60 एंड 30 माइनस कर दो। क्लियर। डन। चलो इफेक्ट्स दे दिया, अभी क्या फाइंड करेंगे? परचेज कंसिडरेशन। वी आर डन विथ एडजस्टमेंट्स बिफोर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के पहले एडजस्टमेंट जो करने थे वो कर लिए। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ पीसी। बोलो विच मेथड? देखो पीसी अंडर नेट पेमेंट मेथड। पार्टी कैलकुलेशन अमाउंट है। करो 8 equity share of 10 each will be issued by P Limited against 6 shares of Q Limited. इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे। Those who have 6 shares they will get 8. How many shares were there? $30,000 है ना यहाँ। हुआ यहाँ तक। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। $10% preference shareholders of Q Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference share at 100 each at par. सेलिंग कंपनी कौन सा है? तो Q लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना। करेक्ट।
अभी क्यू लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर है कितना वो चेक करो, 1 लाख, बराबर है। अभी लैंग्वेज पढ़ो क्या दिया है, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड विल बी डिस्चार्ज एट 10% डिस्काउंट। तो दो क्वेश्चन पूछने का, कितना पे करना है, कैसे पे करना है, हाउ मच टू पे, हाउ टू पे। सो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10% discount means we will pay 90,000. So 90,000 we will pay. अभी कैसे पे करेंगे, सोचो आगे क्या लिखा है। एक प्रेफरेंस शेयर पार पे देंगे, 100 रुपीज पार वैल्यू, 100 पार, सो डिवाइड बाय 100, यू विल गेट 900 प्रेफरेंस शेयर्स। ये समझा कि नहीं समझा, 900 10% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे ऑफ रुपीज 100 each। Issued at par 4,90,000। यहाँ तक हुआ, समझाइए। चलो, वी आर डन विथ पीसी, दैट इज अवर फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट। सेकेंड, जर्नल इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। कौन है ये, परचेसिंग कंपनी। डन, क्या हो गया आर्यन, अरे विदाउट रीजन, विदाउट रीजन असं आहे, सिंस इलॉजिकल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जर्नल फर्स्ट वन, first we will pass adjustment entries, PPE to reserves and surplus,
Second, we will go for equity dividend. And equity dividend किधर ट्रांसफर होगा? So reserves and surplus. Done. Adjustment entries are done. Now we will go for absorption entries. Absorption entries में I think so we had 3 basic entries, correct? First, liquidators of Q Limited account debit. टू, मोड्स ऑफ पेमेंट क्या था? पार पे इशू किया है, करेक्ट? मैनेजेबल फिगर्स। थर्ड एंट्री क्या है बोलो? नाटो। चलो लिखते जाओ, साथ में रहना, फंसने वाला है, ध्यान दो। नेट एसेट्स टेकन ओवर का एंट्री करना है। पीपी अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो 2,50,000 प्लस 37,500, अमाउंट लिखो 287,500। सेलिंग कंपनी के एसेट्स टेक ओवर करना है, क्यू लिमिटेड सेलिंग कंपनी। लिखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, $80,000।
Inventory account debit 3,20,000. Debtors account debit 190. Bills receivable account debit 20,000. कहाँ से लिया समझाइए? ये जो 210 है उसका बाइफर्केशन इधर नीचे दिया है. So we have to consider debtors and bills receivable both. आगे cash and cash equivalents account debit 10,000. Clear everybody? Asset done. एक लाइन छोड़ के 2. The liabilities में first item is long term borrowing. Long term borrowing 1,50,000 है. There is 12% debentures. कुछ info है क्या उसका? है. So लिखो 2. एक लाइन छोड़ के लिखना 2. 12% debentures. अभी मेरे को बोलो 12% डिबेंचर बुक में कितना है? बुक में कितना है? 1,50,000 बुक में. वी हैव टू कंसिडर विच वैल्यू हियर? रिवाइज वैल्यू फाइंड करो. 12% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम. तो कितना पे करना है वो सोचने का. सो लो कैलसी 1,50,000 प्लस 8% 162,000 लिख दो. 12% डिबेंचर के सामने 162 और द डिबेंचर के ब्रैकेट में लिखो 1,50,000 प्लस 8%. क्लियर? पक्का? डिबेंचर्स डन. लाइबिलिटी में डिबेंचर हो गया. अभी ट्रेड पेएबल. ट्रेड पेएबल का बाइफिकेशन लिखो. टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,25,000 टू बिल्स पेएबल 25. टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,25,000 टू बिल्स पेएबल 25. और कुछ लाइबिलिटी नहीं है. टू बिजनेस परचेज. एक सेकेंड. इन्वेंट्रीज आर टेकन ओवर एट 5% लेसर देन द बुक वैल्यू बोला. इन्वेंट्री कितना लिखा आप लोग ने? हाँ, उसका ब्रैकेट में लिखो 3,20,000 माइनस 5% कितना आ रहा है? 3,04,000 करो. 320 माइनस 5%. $3,04,000 आएगा ना. 16,000 माइनस कर दो. 320 माइनस 5%. बाकी सब हो गया. टू बिजनेस परचेज किया. कितना आ रहा है?
कितना आया क्या? कैपिटल रिजर्व 89,500 सबको आया? देव डन। चलो नाटो हो गया। नाटो के बाद नंबर 4 कैपिटल रिजर्व कितना है आप लोग को? 89,500 ओके फेयर इनफ। नंबर 4 लाइबिलिटी पे करना है। लाइबिलिटी में चेक करो कौन सा लाइबिलिटी टेक ओवर किया है। थर्ड एंट्री में देखने का डिबेंचर्स है, फिर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल है, बाकी किसका भी इन्फो नहीं है। डिबेंचर्स का इन्फो है। कितना % डिबेंचर है? 12% है ना। 162 का टेक ओवर किया है तो 162 आएगा। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,62,000। इसको रीपे करना है। अभी पढ़ो क्वेश्चन में कैसे रीपे करना है। 12% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट। ये ओल्ड वाले हैं, अभी नया वाला इश्यू करेंगे। $1,62,000 डिवाइडेड बाय 10% डिस्काउंट मतलब डिवाइडेड बाय 19। डायरेक्ट करूँ ना? कितना आ रहा है? 1,800 debentures. Face value will go in debenture account 1,80,000 and new debentures are issued at discount. डन। और कोई लाइबिलिटी का बात किया है? नहीं। एंट्री नंबर 4 इज ओवर। व्हाट इज एंट्री 5? लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड। एंट्री बोलो। नेक्स्ट लेक्चर बैठ करके आना सब वापस। आएंगे तो डन। चल वी आर डन विथ व्हाट? लिक्विडेशन एक्सपेंस डन। नाउ कैंसलेशन। इंटरकंपनी डेटर क्रेडिटर है कैंसिल करो। क्रेडिटर्स टू डेटर्स 10,000। इंटरकंपनी बिल्स नहीं है, लोन्स नहीं है, कुछ नहीं है, स्टॉक नहीं है, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी नहीं है। दैट्स इट, हो गया। जर्नल इज ओवर। चलो अभी क्या बनेगा? बैलेंस शीट।
I am assuming you all know the format. I would prefer one full page, then it is up to you. One page balance sheet, one page notes. Equity and liabilities. How to prepare this balance sheet? Old balance sheet plus or minus journal. Shareholders fund. Share capital. Note number 1. Issued, subscribed, called up and paid up. Done? बोलो. P Limited old balance sheet 6 lakh का equity share.
एंड 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर, 6 लाख कैल्सिपिलो प्लस और माइनस जर्नल 6 लाख था, प्लस चेक करो जर्नल में किधर इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या, यस 4 लाख ऐड कर दो, दैट्स इट। कितना हुआ 10 लाख। एक शेयर कितने का था 60,000, कितना आ रहा है 6 लाख, टोटल कितना है अपना 10 lakhs, 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Fully paid up. Lakhs. %10 प्रेफरेंस शेयर 2 लाख था, नया कितना इशू किया, तो 290, नेक्स्ट लाइन लिखो, आउट ऑफ द अबाउ 40,000 equity shares and 910% preference shares were issued for consideration other than cash. $12,90,000. We are done with share capital. We'll go for reserves and surplus. Reserves and surplus कितना था, so 3 लाख प्लस 45, 345 था, 345 था। अभी जर्नल चेक करो, $89,500 का कैपिटल रिजर्व आया, फिर कैपिटल रिजर्व माइनस किया 30, और सिक्स में भी कैपिटल रिजर्व कुछ है, सिक्स में क्या था, ओके दैट्स इट। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कितना कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ 89,500, फिर माइनस और कुछ है 59,500 कैपिटल रिजर्व, अदर 345, $404,500. We are done with share capital and reserves and surplus. Next, number 2, non-current liabilities. In that we will have long-term borrowings.
In that we have 12% debentures, which is 2 lakhs. और जर्नल चेक करो तो कुछ और है कि एक ही आइटम है. जर्नल में भी एक डिबेंचर रहेगा. है कुछ 180 है ना. सो 2 लाख वो भी 12% ही है ना, प्लस 180. It will be 0. Old balance sheet plus or minus journal. Done. चलो डिबेंचर्स हो गया. उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल, that is current liabilities. Trade payable, note number 4. In that we will have creditors and bills payable. Creditors खुद का कितना था, 220. 120 था. क्या कर रहा है टोटल? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तक क्लियर.
इन्वेंट्रीज में 240 प्लस 3,04,000 था ना। ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 5। आरडीडी था क्या? डेटर्स कितना था? 360 प्लस टेक ओवर कितना किया? 190 बरोबर है, चेक करो जरा। और 10,000 का कैंसलेशन है इंटर कंपनी 540 बिल्स रिसीवेबल 60 प्लस 20 80 620 नहीं किया, इधर माइनस नहीं हुआ है, करना चाहिए। माइनस 10,000 35 390 390 60 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का 18,000 और कुछ पे किया है हमने कैश 30 और माइनस होगा। कैश पे किया है और माइनस जर्नल चेक करने का एक्चुअली 30 टोटल
आ रहा है? डन. कौन सा क्वेश्चन था ये? 8. Question number 2. Question 2, I will read. A balance sheet of Backward Limited as on 31st March 2017 is given here. Preference share, equity share, capital reserve. Then we have loans, creditors, bills payable, bank OD. Okay. Land and building machinery, motor lorries, trade receivable, less provision, stock, cash, P&L debit balance. It seems company is backward limited and it is actually loss making company, and there is a contingent liability in respect of royalties 15,000. It was agreed that Progressive Limited should acquire the under mentioned assets at value stated. मतलब ये चार ही एसेट लेके जा रहे हैं. 2 लाख लैंड एंड बिल्डिंग इज टेकन ओवर, ये टेक ओवर हो रहा है. मशीनरी टेक ओवर हो रहा है. मोटर लॉरी टेक ओवर हो रहा है. डेटर्स आर नॉट टेकन ओवर. स्टॉक टेक ओवर हो रहा है. कैश नॉट टेकन ओवर. सो ओनली अंडर मेंशन्ड एसेट्स आर टेकन ओवर एट द वैल्यू स्टेटेड. सो 4 एसेट लेके जा रहा है. इसका टोटल करो, इट विल बी 4 lakhs. And the total consideration 4 lakh, PCB 4 lakh है, which is payable, was satisfied by allotment of 20,000, 6% preference share of 10 each fully paid up. मतलब 2 lakh का preference share, 20,000 equity share of 10 each fully paid up, 2 lakh का equity share. Clear? Now what about debtor and cash? Cash तो cash account में जाएगा. Debtor को क्या करेंगे? रियलाइज करेंगे. करेक्ट. ओके. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट लाइबिलिटीज. हाँ, मतलब टेक ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
लाइबिलिटीज टेक ओवर नहीं हो रहा है, ओनली अंडर मेंशन एसेट्स आर टेकन ओवर एंड 4 लाख का ही तो नेट एसेट है और 4 लाख का ही पेमेंट है, तो 4 एसेट लेके जा रहे हैं सर, करेक्ट. And did you realize that it was arranged that Progressive Limited should acquire under mentioned asset? ये backward limited selling company है, Progressive Limited कौन है? Purchasing company. यहाँ तक clear? Book dates realized 1,30,000. Okay. ये कौन realize करेगा? Book date समझता है? Book date समझता है? Daters. Who will realize that? Selling company, because purchasing is not taking over. Amount of trade creditors proved to be 81,000. Creditor कौन पे करेगा? Selling company. Cost of winding up कौन पे करेगा? Selling company. Preference shareholders in old company accepted preference share in new company in full satisfaction of their claim, whereas equity shareholder took equity shares in new company and balance amount will be paid in cash for final settlement. Okay. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या देंगे? जो अभी अभी प्रेफरेंस शेयर मिले वो दे देंगे. इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे? जो इक्विटी शेयर मिले हैं ना 20,000 ऑफ 10 ईच वो देंगे, प्लस कैश अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा वो उनको दे देंगे. तो लास्ट में इसे भी कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, उनको दे देंगे. क्लोज द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी. दैट्स इट. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, where one loss-making company is being taken over by Progressive Limited. So it is a question of external reconstruction. Same way accounting will be done. Let us start. Question number 2, we will calculate PC. 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे. क्या देंगे? जो प्रेफरेंस शेयर मिले 20,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स विल गिव देम.
डन। डन। कितना 7 अकाउंट बनाया। रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैश बैंक, प्रोग्रेसिव लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन प्रोग्रेसिव लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर्स इन प्रोग्रेसिव लिमिटेड। डन। स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 1, एम्प्टी द बैलेंस शीट। स्टार्ट करें ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख किधर जाएगा, बाय
7% preference share capital 4 lakhs. Equity share capital 6 lakhs by equity share capital 6 lakhs. Capital reserve 12,100 by capital reserve 12,100. Then 4 liabilities. All these liabilities will go in realization account. Loans 5,000. Trade creditors 86,100. Bills payable 4,200. Bank code 9,400. इनर में लिखा तो आउटर में टोटल, आउटर में लिखा तो नो वरीज. Done? Now, sundry liabilities done. Land and building, plant and machinery. Be like 18. $165. Motor lorries 6,200. Trade debtors 134. RDD किधर जाएं? Provision 3,000. Stock 83,500. Cash taken over or not taken over? Not taken over. So cash will go in cash account. ये निकालना है. Equity shareholder debit side, it is accumulated losses. Equity shareholders will bear this. Done. I hope you understood till this. We are done with step 1. Now step 2. PC due, PC received. PC due means receivable. Entry progressive limited account debit to realization. क्लियर. क्या कंप्लीट किया? पीसी ड्यू. अभी पीसी रिसीव करेंगे. क्या क्या रिसीव कर रहे हैं हम लोग? मोड चेक करो. 6% प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर. 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख का इक्विटी शेयर. सो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 2 lakhs.
preference share account debit 2 lakhs and progressive limited में by equity share in progressive limited 2 lakhs by 6% preference share in progressive limited 2 lakhs. Tally Y. Which step is over? What is step number 3? Realization expense check करो कितना है 1400. So realization to cash bank 1400. कैश बैंक में बाय 1400. Clear? Step 3 is over. What is step 4? अभी ये इंपॉर्टेंट है. डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच आर नॉट टेकन ओवर. बोलो क्या टेक ओवर नहीं हुआ. एसेट में बोलो पहले इधर देखने का. ये डेबिट में. रियलाइजेशन में लैंड एंड बिल्डिंग बोलो टेक ओवर हुआ कि नहीं हुआ. हुआ. मशीनरी, मोटर लॉरीज, स्टॉक, डेटर. क्वेश्चन में 4 ही एसेट टेक ओवर हुआ है ना. क्या टेक ओवर नहीं हुआ है. डेटर्स टेक ओवर नहीं हुआ है. तो डेटर को हम रियलाइज करेंगे. कितना रियलाइज किया डेटर 130. एंट्री लिखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 130. सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड 130. क्लियर. चलो सो एसेट्स आर डन. अभी लाइबिलिटीज में चारों लाइबिलिटी हमें पे करना है. सो चारों लाइबिलिटी पे करेंगे. एंट्री बोलो क्या आएगा. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैश बैंक. लोन. लोन का कोई फिगर दिया है क्या पे करने का. नहीं बोला है कुछ, मतलब पूरा पे करेंगे. ट्रेड क्रेडिटर्स का फिगर दिया है 81,000 पे करेंगे. बिल्स पेबल का फिगर नहीं है, पूरा 4200 पे करेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट था, इसका फिगर 9400 पे करेंगे. टोटल 99,600 पे करेंगे. सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड 99,600. कंफर्टेबल. विच स्टेप इज ओवर. हो गया 4. दैट्स इट. अभी फिफ्थ में क्या करना है. प्रेफरेंस शेयर को पे कर देंगे. चलो मेरे को आंसर दो. प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए हमें क्या मिला था. क्या ना ऐसे प्रेफरेंस शेयर मिले थे 2 लाख के. दे दो उनको. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
to 6% preference shares of Progressive Limited. How much? Relax. सेकेंड इफेक्ट दे दो. हुआ यहाँ तक. किसको पे कर दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया. कैपिटल कितना था? 4 लाख पे करने का था. हमने कितना पे किया? क्यों कम पे किया? कंपनी लॉस मेकिंग है, दे विल सेक्रीफाइस. In other words, balancing figure will be transferred to realization account, 2 lakhs. Realization में buy, डन. कौन सा स्टेप कंप्लीट? फिफ्थ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे हो गया. अभी क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस टू इक्विटी शेयर. $30,000 प्रॉफिट चेक करो. डन. चलो इधर तक हो गया. अभी कैश क्लोज करो. एक ही बचा है. 42,100 आना चाहिए. अरे इक्विटी शेयर होल्डर को 42,100 कैश दे दो. एंड इक्विटी शेयर होल्डर को वो एक अकाउंट और है ना, इक्विटी. ये भी दे दो.
क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क करना कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। आर्यन होमवर्क करके आना भाई। डन? Real tallied? Yeah. So thank you very much. See you tomorrow. Bye. Take care.